देख लेंगे, कर लेंगे, बट आपको एक ही क्वेश्चन अराउंड 2 to 3 टाइम्स करना ही है, वो भी मॉड्यूल और पास पेपर। अगर मैं आपको समराइज करूं, yes, only pass foundation paper, yes, from May 2018 it's available on the website, you can go with the website and आप उसको solve कर सकते हो। तो मॉड्यूल 2 is around cover 50 to 60 marks। तो अगर आप वो करते हैं, already we have done in the 12th also, final account, NPO and उसके बाद में partnership and last company account। If I talk about the module 1, तो उसके अंदर there are so many chapters, जैसे we can say rectification of error, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद में कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद में सेल्स ऑन गुड अप्रूवल्स, उसके बाद में एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करना। दीज आर द 6 चैप्टर्स जो हाईली वेटेज है। तो इफ यू डू ऑल दीज चैप्टर्स, डेफिनेटली यू कैन कवर अराउंड 70 to 80 मार्क्स। एंड व्हाट यू नीड टू जस्ट रिवाइज रेगुलरली, बस आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज होता है ऐसा है कि मतलब एक परसेप्शन है कि मैंने एक बार कर लिया, चलो ठीक है, सेकंड बार नहीं करेंगे, देख लेंगे उसको, अपन कभी ओरली सॉल्व कर लेते हैं। वी कैन टेक अ कैल्शियम बाय, चलो 1 + 1 2 हो गया, चलो अब एग्जाम में जाएंगे तो 1 + 1 आपको कभी कभी लगता है कि 3 हो रहा है। वो गैप कौन सा है? वो गैप इज आपका प्रैक्टिस, जितना लैक ऑफ प्रैक्टिस है वही रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि यू जस्ट स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, बट कभी अपने आप को बैक मत करो कि चलो आज मैं इतना ही पढ़ूंगा, बिकॉज वी हैव 35 days remaining। So it's your duty, you have to study around 8 to 10 hours, minimum 8 to 10 hours आपको पढ़ना है। And apart from, you have to judge yourself by solving past year papers also, and as and when you will solve, definitely you will get motivation कि नहीं यार ये टाइम पे अपना फाउंडेशन क्लियर है। क्योंकि जब हमने भी किया था तो वो टाइम पे वही हमने काम किया था, रेगुलर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको सिखा सकते हैं। Yes, we can teach you, but at the end you have to just go through with the papers and you have to revise regularly. And the last thing I want to say that you have to just written practice. The more you will write, the chances of passing will increase. It's a last statement. So this is all about the account. You just go with that. I already told you about organize. First you go with the module 2, और पूरा module 2 अपने को properly revise करना है। Apart from that, you have to solve module 1. So when you do that, definitely you will get success. Okay. Thank you so much. Any query? दर्शन सर, हाँ बोलिए। आप ही लेंगे या बाद में लेंगे? बाद में भी ले सकते हैं सर, पहले एक बार हो जाए तो अपन बाद में ले सकते हैं। Yeah. Okay. Now I request C.A. Vishwanath Sharma sir. He's been the faculty for law, BCK and BCR, to please guide the students on these subjects. Thank you, 𝐿𝐿𝐿 sir. Am I audible? Okay. I'm very grateful to Satara WICASA for having me over here, and also a big thank you to 𝐿𝐿 sir. I know him personally. 𝐿𝐿 sir, I also know him personally, and ℎर्षल sir. Let me come to the point directly. ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। IPL का सीजन चल रहा है, होपफुली आप देख नहीं रहे होगे, बट मैं उससे कुछ कोरिलेट करने की ट्राई करूंगा। I think we do understand this that IPL में जो लास्ट ओवर्स होती है, they are the deciding overs. And for me, जो मे एग्जाम या आरी एग्जाम जून में, I think अभी हम उस लास्ट ओवर के फेज में चल रहे हैं। ठीक है, इस लास्ट ओवर के अंदर हम जितना स्कोर कर लेंगे, that will basically decide upon कि रिजल्ट क्या रहेगा। अभी वो टाइम नहीं है जब हम सिंगल्स और डबल्स लेंगे। बाय सेइंग सिंगल्स एंड डबल्स, आई ऑब्वियसली मीन टू से कि हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, दैट विल ऑब्वियसली नॉट सॉल्व द पर्पस। दिस इज द लास्ट ओवर। ठीक है, लास्ट ओवर चल रही है। वी नीड टू बी स्टडिंग फॉर अराउंड 6 to 7 hours एटलीस्ट, मिनिमम, बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ सर, 6 to 8 hours, and maybe that will help us lift the trophy. When I say lift the trophy, I obviously mean passing the CA foundation exam. Coming to my subjects, BCK, BCR and law, in and around 140 marks. The problem, if I happen to speak on them individually, starting from BCR, okay, the problem is we feel a bit fearful when we are solving the BCR paper या फिर practice कर रहे हैं. At that time also we feel कि नहीं जम नहीं रहा है, ठीक है, we don't feel that much confidence. Maybe the reason is we don't know the direction. मुझे ऐसा लगता है that the reason maybe is we don't know the direction. If I just happen to share with you a small PDF of mine which I prepared for you,
एक बात थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, very helpful, especially if you are giving the exam in June. Even for those who are giving in November, this should be very helpful. ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ. हमारा टारगेट रहेगा बीसीआर के अंदर 40 में से 34. सर 34 से ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं, 34 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज इंग्लिश पेपर है, दे डोंट गिव फुल मार्क्स. ठीक है, सो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल. After the first 6 questions, which is the part of law, the 7th question that we have is from BCR. Okay, one word is BCR. Question number 7 is compulsory, which is divided into 2 parts. You can see one of them is comprehension passage. I have written the chapter note also, chapter number 4 of yours. 5 marks का आता है सर. On the other side, जो second है A के साथ B, it is from chapter number 5, that is note making and summary. Again 3 plus 2, 5 marks. मतलब सर 10 मार्क्स कंपलसरी आपका यहाँ पे हो जाता है. नाउ इट इज सो वेरी ऑब्वियस आई गेस दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद लेट्स से बीसीआर रिवीजन, मे बी आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 ओनली, बिकॉज आई कैन सी द ट्रेंड हैज बीन सच दैट सर उसमें से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर. तो नोट मेकिंग इज समथिंग दैट आई विल स्टार्ट विद. कॉम्प्रिहेंशन इज ओनली समथिंग आई वुड से व्हिच रिक्वायर्स प्रैक्टिस. उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. ऑल यू नीड इज अ बिट ऑफ ट्रिक्स. जैसे सर I'll read the questions first and then I'll read the passage. What normally students do is they read the passage and then they start the questions. Then they don't find the answer, they again go back to the passage. I would rather say, why not study the questions first and then read the passage? Maybe that is a hack that will help you out in saving the time at least. तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं. ठीक है, we need to think about this. The compulsory question that we have, chapter 4 and chapter 5. What I can then say is, next 4 questions, question number 8, question number 9, question number 10 and question number 11. इसमें से हमें कोई भी 3 करने होते हैं, any 3 out of the 4, because BCR carries 40 marks, right? So ऊपर का 10 marks compulsory हो गया, then the next 30 marks is what we have right now in front of you. Any 3 out of the 4. Each and every question will be divided into 3 parts. The first part will be from the chapter communication, that is chapter number 1. The B part will be sentence types and vocab, that is your chapter number 2 and chapter number 3. And the C part will always be format based. When I say format based, what I mean to say is these chapters: Pressy, article, report, letters, mail, resume and meetings. Okay, this is what I mean to say when I say format based questions. What one more thing I can see right now here is, again sir, communication chapter number 1 again becomes very important. Sir, why? 2 मार्क का क्वेश्चन आता है and you need to attempt 3 such questions. तो 6 मार्क्स हो गए. 6 मार्क्स out of 40 means a lot. Then again I can see chapter 2 and 3 combined carries around 9 marks. 3 मार्क का आता है और ऐसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. 3 into 3 9. So we need to be a bit smarter. That sir, okay, we'll start from chapter number 5, that is note making and summary. We'll move towards chapter number 1 and then we'll move towards chapter number 2 and 3. इन शॉर्ट फर्स्ट 5 चैप्टर्स मैंने कर लिए. आप समझ लो आपके 25 मार्क्स तो आराम से आ गए. आपके 20-25 मार्क्स तो सर आराम से आ गए. व्हाट यू नीड टू फोकस नेक्स्ट इज ऑन द फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू कि सर 5 मार्क के आएंगे. ठीक है, हियर आई कैन सी फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क्स and 3 such questions, total 15. And there you go, these are the chapters that are format based. ठीक है, a format is something, I'm stopping to share the screen. फॉर्मेट इज समथिंग यू नीड टू नो कि उसमें सर आप रट्टा नहीं मार सकते कि आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा ऐसा फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट एंड आई विल बी डूइंग दिस एंड गेटिंग द मार्क्स. नो, दिस इज नॉट द केस. यू आर नॉट हियर स्टडीइंग फॉर बीकॉम, वी आर स्टडीइंग फॉर सीए एंड द लेवल नीड्स टू बी अ बिट हायर. व्हेन आई से अ बिट हायर, इट डेफिनेटली मींस you need to practice a lot, and BCR में you ought to be practicing a lot. If you just happen to see, flip the pages कि हाँ ठीक है लेटर ऐसा करेंगे, हाँ नोट मेकिंग ऐसे करेंगे, सर एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा. I'm again saying this is not BCom, this is CA. You will need to practice it by writing, and then only you can overcome the challenge. And I assure you, if you just happen to be a bit more serious this last month, you will crack it for sure. Coming to the next subject, BCK, business and commercial knowledge, which is again carries around 40 marks. Paper number 4 comes along with economics. We have 2 chapters, chapter number 3 and chapter number 6.
in BCK, which across India, I'm saying across India, सब छोड़ के जाते हैं, each and every one. आप में से अगर किसी ने पढ़ा हुआ है BCK, they must be knowing that yes sir, even we have left out with chapter number 3 and chapter number 6. Is it? Please let me know. In case you have studied BCK, do let me know. Chapter 3 and chapter 6 is what I'm talking about. That is business terminologies and business organizations. Those 35 companies, okay, you ought to be saying yes. मेरे पास पूरे मैसेज भरे पड़े, yes 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 करके. Chapter 3 छोड़ूंगा, chapter 3 नहीं हुआ, 34 companies नहीं हुआ. See, I'm knowing this, ठीक है? The hack is, I can get you through this chapter number 3 in around 1.5 hours. 1.5 hours. In that 1.5 hours, what I can assure you is, कि सर रात को 3 बजे भी उठ के पूछेंगे ना, तो भी हम सारी की सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, स्लोगन्स, विजन, मिशन, ये सब बोल पाएंगे. All you need is, you know, a bit of an effort and a few tricks that can help you, you know, get over the topic. And you need to understand this at your level, that agar across India, if people are leaving those chapters, and if we happen to do those chapters, अरे हम automatically उन लोगों से आगे हो गए. We automatically are ahead in the line if we just happen to do those 2 chapters which others are leaving. We call this strategic edge in our strategic management. Okay, so you just need to be a bit you know, more smarter rather than being someone who is doing more labor work. सब मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा smart work भी करना पड़ेगा. And with regards to law, again I would say the time is over. जब आपको सारे concepts सीखने चाहिए थे, the time is now more towards practicing the questions. We at ICAI, we are very practical and we understand कि students को रट्टा नहीं मारना चाहिए, and that is why we ask you case study questions more. So whatever the topics that you have done already and whatever the concepts you have in your mind already, how do we apply them? And for that you need to be doing a hell lot of questions. Questions आपको सर बहुत आसानी से मिल जाएंगे on the ICAI का website. Lots of them mock test papers आपको मिल जाएंगे, RTPs आपको मिल जाएगी. आपको one after another उन सबको देखना चाहिए, and मैं तो बोलूँगा कुछ को लिख के भी करना चाहिए. You ought to be having writing practice. Why I'm focusing more on writing practice is because law and BCI is such a paper which, you know, you might not be able to complete in those 3 hours that you have. You might not be able to complete those 100 marks. You will be only able to complete it if you have a bit of writing practice. ठीक है, आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, वो अभी ही टाइम है, अभी भी टाइम है. ठीक है, the more questions that you do, the more your concepts become clearer, and hence the focus is more upon practice now. ठीक है, more and more questions. किस तरह से आंसर लिखने हैं, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, I think we'll talk upon all those things for sure. I personally think कि एक बार सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद हम लोग जनरल डाउट डिस्कशन सेशन लास्ट में रख सकते हैं. So I would like to, for the time being, end it over here. Maybe again I'll come up with your solving the doubts, but abhi I think itna theek hai regarding the introduction part. ऋषिकेश sir, back to you. I think Hrishikesh sir is not there. Mitali ma'am, maybe you can start. Yeah, I think he said that first mathematics will be covered, then I should take economics. I mean, I can take now also. I don't have any issue. Shall we just wait for him, or I can just continue? No, ma'am. You maybe you can start. Okay, sure. Good evening, everyone, my dear students and also fellow professors. So I'll be guiding you on economics. There are 3 strategies basically I will be giving. I have divided these strategies in again sub 3 parts. First, we will focus upon what we can do right now. Like, see, I can't say कि अभी आप prepare करोगे और हो जाएगा. That is not something possible. But हाँ, if you are doing it strategically, तो easily at least you will be able to get grasp of all the concepts. So पहले हम लोग focus करेंगे कि क्या आप preparation level पे कर सकते हो. Then we can talk about revision part, and then finally we can say कि okay, exam hall में जाके क्या mistakes नहीं कर दिए, क्या चीज को हम लोग को focus करना चाहिए.
So I will like to use whiteboard. So sir, can you give me the access? Because I think it is something which can be given by Rishte sir. You can directly use, ma'am. I can? Okay, sir. Okay, yeah, yes, sir. Yeah. Sir, is it okay if I start or you wanted to continue with maths? No, ma'am. You are the host right now. First thing you should do it. Sorry, hello, sir. I couldn't hear you. Can you repeat? Or make me the host. Host or co-host. And you can start the session. Sir, can you please repeat? I couldn't hear you properly. Whom shall I make co-host? Yeah, yes. And everyone is requested not to sleep or anything. Sir, you can do this in settings. I mean, only a host can get the access. Guys, this is what KG students do, yaar. तुम लोग CA foundation में हो. मैम एक बार स्क्रीन क्लोज करके फिर से स्टार्ट करो. Sir, I am doing it, but someone is actually. Should I try? Students. Should I try to change the rights? Ma'am, make me the co-host. I will do it. Yeah, sir. Give me a second. Hrishikesh, I am making you host. Yeah. Hrishikesh, you are host now. Yes, sir. Ma'am, until then, can you? Yeah, I'll just continue with the words. Yeah. So Yeah. first, what I will try to tell you is that first we should focus upon your preparation level strategy. Economics में अगर आपको score करना है तो you need to have that conceptual clarity. That is the most thing. Otherwise, बहुत मतलब ऐसे लगता है students को कि we have done this in 11, 12, so it is quite easy. But if you see ICAI's past papers, you will understand how much clarity is required. Second most important thing is that you need to get grip over your syllabus and your past year papers. Now students might ask कि अभी हम लोग कहाँ से past year papers ले, ICAI तो publish करता नहीं है. So you might get it over few or many of the websites where they actually give it. So memory based papers रहते हैं, you can use it. Second thing what you can do is that you can go for your ICAI material. So ICAI के material के पीछे जो question bank रहता है, no, don't just read it or don't just mug it up. Students think कि okay उसमें से ही आ जाएंगे, वैसे नहीं होता है. But your questions are more or less similar or on the same line. Okay, ये हो गया आपको. Basically you need to know where to start. Then if it is your theory subjects, it is so normal that you need to have multiple revisions. If you don't have it, you won't be able to get the grip over your subject, right? So सबसे important चीज है ये. Sir, can I use it now? Please try ना, होना चाहिए. I think no. नहीं. That's fine. You can try right now. Yeah. उनके नाम दिख रहे मैम. We can ban them. Yeah. Remove them from the meeting. No, that's fine. I mean, it's their loss. That's fine, sir. I can continue without whiteboard. I mean, that won't be an issue. I think now I can use it, it seems. Let me try. So first what I said, first year question papers, very important. Then your syllabus. So ICM material. Okay.
why I am writing so that students can take a screenshot. Otherwise they keep on messaging कि वो पहले साइड पे क्या लिखा था, सेकंड पे क्या लिखा था. Then after that it is very important कि आपको एक 3 readings होना जरूरी है. First reading में what you can do is that you can just read it without marking anything. अभी ये तो स्टेज होना चाहिए सबका अब तक. Okay. So it's better if we continue without whiteboard. That's not an issue. I mean, it's very difficult to believe that this is CA Foundation student public. Yeah. Anyway, so what we can do is that students, you should first go for your revision. So first make sure you know the concepts. Then after that underlying part के बाद जो भी आपने लिखा हुआ revise that only. Very important parts which I'll be telling you, you can note it down. Like you need to have grip over your economics, because बहुत बार ये questions आते हैं कि कौन से economics में क्या contribution दिया, and these are very straightforward questions. Like अगर आपको पता है कि उसका answer क्या है, तो there are very less chances that you will commit any mistake. So again यही part के साथ एक चीज link होती है कि आपके इको के पेपर में ना 2 types के questions ज्यादा रहते हैं. एक आपका रहता है memory based and एक आपका रहेगा एक conceptual based, right? So memory based is mainly like factual based कि कौन से economics का कौन सा book था, कौन से कर्व में कौन सी चीजें के लिए define किया हुआ है. So ये सारी चीजें आपकी उसमें आ सकती है. So वहाँ आपके preparation level में आपको थोड़े efforts डालने पड़ेंगे, but exam में अगर आपको वो चीज पता है तो wrong जाने के chances बहुत कम रहते हैं. Second one which we can talk about is basically आपका जो conceptual है. तो उसमें what we can do is that if you know a concept, तो आपको questions थोड़े twist करके आएंगे ना, तो भी आपको आसानी से you will be able to get through it. So focus on these 2 things. Then very important कि आपके जो national income के concepts है कि NNP क्या है, GDP क्या है, ये चीजें बहुत बार students को confuse होता है, and उसमें से questions exam में आते ही आते हैं. So your sequence of studies can be, first you should focus upon national income वाले subparts. Then you can go for your demand, supply and consumer behavior. Now these 3 chapters कहीं ना कहीं students ने किए हुए हैं, तो आपको वो थोड़ा familiarity वाला feeling भी आएगा. But don't go in overconfidence कि हमको तो ये आ रहा है, क्योंकि if you look at the questions which ICAI asks, वहाँ conceptual questions है. It is not something that you will go for like easy cakewalk वाले questions. So make sure you are reading question very correctly. Because बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि which of the following are correct or incorrect, and क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, फेमिलियर लगता है, तो what students do, they feel okay ये तो हमें आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, we'll go for this. But करेक्ट के जगह पे अगर इनकरेक्ट मार्क करके आए हैं तो that will like आपको तो पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो that will be more आपका ज्यादा लॉस होने के चांसेस ज्यादा है उसमें. Then we come like आपका नेशनल इनकम हो गया. Then go for your सेकेंड वाले पार्ट जैसे बिजनेस साइकिल, उसमें इट इज वेरी इजी इफ यू नो द कांसेप्ट. रेसिशन क्या है, मूव क्या है, पीक कब है, ट्रूप कब है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर. सो डू दैट लेटर. देन लास्ट योर कम्स योर मार्केट, जो डिफरेंट मार्केट्स है, कौन से मार्केट में क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए. मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि अगेन दोज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. एग्जाम में बहुत बार स्टूडेंट्स ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो डर के ही छोड़ देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द इजीएस्ट वन इफ यू नो आपका एमआरसी एआरसी क्या है. सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस कांसेप्ट्स इज दैट यू शुड बी वेरी थरो विद दिस कांसेप्ट्स, देन ओनली यू विल हैव ग्रिप ओवर इकोनॉमिक्स. बिकॉज इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट सीए का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आप ऐसे इजीली मगअप करके स्कोर कर सकते हो. लाइक देयर इज नो सच सब्जेक्ट. सो फॉर दैट यू नीड टू नो बेसिक कांसेप्ट्स. And उसके साथ try to make one page notes for each topic. Like for example, if you read something about inflation, तो अगर चैप्टर नंबर 1 में कहीं इन्फ्लेशन आया है, ऊपर हेडिंग डालो इन्फ्लेशन, उसके नीचे आगे के चैप्टर्स में जहां इन्फ्लेशन का कोई रेफरेंस आएगा, जैसे आरबीआई ने क्या मेजर्स लिए हैं, आपका आ सकता है मनी मल्टीप्लायर क्या है. तो ये सारे टर्म्स उनको ही समझ में आएंगे जिन्होंने एक बार इको के आपके सिलेबस को रीड किया है. मैं कुछ बाहर से नहीं ला रही. तो या अगर आपका कैपिटल लाइक टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है, वेलफेयर है, कौन सी इकोनॉमी के ऊपर कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन रहेंगी, ये सारी चीजें आपको तभी समझेंगी जब आपका बेसिक्स क्लियर है.
So make sure you are making all these one pager notes so that एक दिन पहले आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हो, और try to study economics chapter in connection. Don't try to study it in isolation. Otherwise things won't like they really go downhill. बिहेवियर याद करो, अपनी डिमांड में क्या पढ़ा था, तो आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी. आपके ग्राफ्स भी डोंट ट्राई टू मॉक अप, खुद से ट्राई करो कि ओके अगर एवरेज स्टॉक के साथ ये हो रहा है तो मार्जिनल की क्या हो सकता है. ट्राई टू रिलेट इकोनॉमिक्स एज मच एज पॉसिबल, एंड उसके लिए बेस्ट चीज है ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स. अभी सब लोग बोलेंगे अभी पढ़ाई तो हो ही नहीं, अभी कहाँ न्यूज़पेपर पढ़े, बट ठीक है अभी तो नहीं है, बट एग्जाम के बाद यू कैन कंटिन्यू. ट्राई टू नो व्हाट इज हैपनिंग लाइक अराउंड यू, तो आपको इंटरेस्ट होगा. जैसे अभी सीआरआर आपने पढ़ा है, बट नो वन रियली नोस कि अभी लास्ट वीक में ही आरबीआई ने सीआरआर को इंक्रीज किया. अभी इंक्रीज किया पता होगा, तो क्यों इंक्रीज किया ये भी नहीं पता है. सो अल्टीमेटली जितने आप कंसेप्ट जानेंगे कि एसएलआर क्यों है, क्या है, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में अभी जो क्राइसिस चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी इकोनॉमी में क्या हो सकते हैं. ट्राई टू रिलेट सब्जेक्ट टू योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. अभी ये हो गए आपके प्रिपरेशन लेवल वाली चीजें. सो यू कैन हैव दिस सीक्वेंस. पहले मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ जिनको नोट डाउन करना है. आपका डिमांड, देन सप्लाई, देन कंज्यूमर एनालिसिस यू कैन गो फॉर, इकोनॉमिक्स के आपके साइकिल्स, देन यू कैन गो फॉर बिजनेस. अभी ये बेसिक कांसेप्ट बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं ये को पढ़ना है, तो दैट डिपेंड्स एक्चुअली ना. बेसिक कांसेप्ट इसे आपने स्टार्टिंग में इको पढ़ा रहेगा तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इट. अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टार्ट विद इट. अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ इन स्टडीइंग दैट. जस्ट फोकस अपॉन लेटर पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस ज्यादा है. अभी एग्जाम हॉल में जैसे 2 मिस्टेक्स नहीं करनी है. पहले तो आपको ये पता है ये तो रिटर्न वाला पेपर नहीं है, तो प्रेजेंटेशन के टिप्स तो कुछ है नहीं, बट अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि बीसी के और आपके इको के पेपर में लाइक इसमें बहुत रेयर चांसेस है कि आपका पेपर छूट रहा है. So most of the time आपके पास बहुत ample of time रहता है, and students 30 मिनट्स में पेपर देख के आते हैं, and then बहुत स्टूडेंट को सबसे कम मार्क्स इसमें होते हैं because of over confidence. So we just need to get on our nerves and ऐसे थोड़ा कंट्रोल करना है फीलिंग्स को. 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, 2 घंटे दिए तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, एंड अल्टीमेटली और एक चीज बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि भरोसा नहीं रहता है कि अभी ये क्वेश्चन का राइट होगा या नहीं, तो दे जस्ट मार्क क्वेश्चंस इन देयर क्वेश्चन पेपर एंड देन दे थिंक ओके बाद में हम लोग आंसर्स में मार्क करेंगे. बट तभी क्या होता है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 सपोज आपने मार्क किया, थर्ड का आपको आंसर नहीं आया, और गलती से अगर बाद में एंड में बिकॉज ऑफ प्रेशर अगर आपने लाइन में अलग गलत मार्क किया, तो पूरा आपका ओएमआर शीट आपको मतलब उसका बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है. सो इट इज बेटर इफ यू फोकस ऑन जब भी आ रहा है तभी का तभी मार्किंग्स करो. दूसरी बात, अभी ये चीज बहुत सिंपल है कि जैसे सबको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो 60 उसमें से सब क्वेश्चन सबको नहीं आने वाले, सब क्वेश्चन आने वाले ना ही मीडियम ना ही डिफिकल्ट. सो जब भी क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, ट्राई टू बाइफरकेट दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट, लाइक इजी, मीडियम एंड आपका हार्ड. फर्स्ट फोकस ऑन इजीएस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जो आपको पता है उसमें आप अगर मार्क्स ला सकते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी. सेकंड, फोकस ऑन योर डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉरी मीडियम क्वेश्चंस, एंड देन गो फॉर द डिफिकल्ट वन. और एक बात, नेगेटिव मार्किंग है तो यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट व्हाइल लाइक आंसरिंग योर एमसीक्यू क्वेश्चंस. सो जहां चाहिए वहां आप यू कैन टेक, लाइक आपके 4 में से अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, सो वी विल बी स्टडीइंग दिस इन आवर क्रैश कोर्स की एलिमिनेशन ऑप्शन का कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो आप आपके MCQ पेपर्स में, because no one is going to know everything, so that's for sure. 2 ऑप्शंस भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, then you can definitely go for your calculative based thing. But अगर आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो don't just leave that question over there, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज को नहीं भूलना है. That can affect your score really bad. So these are the overall things which I wanted to cover. So conceptual clarity is must. Then you need to revise things, try to relate it to your daily life. And finally, exam hall में शांति से पेपर पढ़ो and try to give the best out of whatever you have studied. And if you have any particular questions related to economics, you can ask them. But for now, this is what I want to tell you or give you guidance on these topics. Over to you, sir, Rishika sir. Am I audible?
Yes, ma'am. Yeah. Oh. Each session over? Your session is over? Yes, sir. Okay. So, एक second. So good evening and welcome back. Before going for mathematics session, now we will open the session for your queries, and those who are having any queries, please put in your chat box in Zoom as well as on YouTube, so that we can address your queries regarding economics, accounts, law, BCK and BCR. Sir, can I just take one movement, because I read a comment which said ki they didn't get everything. I mean, I just wanted to ask, like, what are the areas where they want me to brush it up again? Okay. Okay. Yeah. Sure. Okay. No, I mean, I asked so we can answer that also later. Open the share screen. You can continue with Kushuna, sir. Over to Yes, you. sir. Oh, sure. Law. I've been receiving lots of messages asking me कि सर law के paper में section लिखना important या compulsory है क्या? No, it is not compulsory, but it will definitely give a very good impact on the paper checker in case you have written the section numbers. And let me be very honest, Companies Act is a chapter where you ought to be knowing the section numbers, because it is something that you're going to read in CA Inter as well as CA Final. So why not, जब तब याद करना ही है at that point of time, why not we can start from right now only? And I'm not saying that you need to be doing each and every section. Maybe the important ones, let's say section 2 clause 68 private company, 2 clause 42 foreign company, 2 clause 45 government company, 2 clause 85 small company. Maybe these 6-7 sections तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना यार, उसमें बहुत effort भी नहीं लगेगा. All you need to do is just write down the sections on one single page. Okay, all the list of sections on one single page, and stick it maybe in your almirah, okay, maybe somewhere on the wall, so that you can see it again and again जब भी वहां से पास हो रहे हो तब. I would suggest this, but हाँ, अगर आप section नहीं लिखते हो तो आपके marks नहीं कटते हैं. Okay, don't worry. So it is not compulsory to write the section numbers. It's okay. Chill. Do we have any other question? Let me know, please, fast. Can we write our own language in law subject? You can mix and match. I'm not saying you that CA foundation level pay you need to be writing word to word what is there in the module. Obviously, this is not the stage जब आप ये सब कर पाओगे. But what you ought to be knowing is that sir हम खुद का language use कर सकते हैं, but those technical words, those jargons, they ought to be from the module. मतलब कुछ तो आपको words और कुछ आपकी language आपकी module से भी होनी चाहिए. It cannot be like आप 100% खुद की language लिख रहे हो. नहीं. अगर module में word use करा हुआ है breach of contract, तो आपको breach of contract ही लिखना पड़ेगा. How can you write it something else? ठीक है. So those technical words you need to write, otherwise you can have it in your own language. Don't worry. Sir, BCK chapter number 3 strategy. Me and Hrishikesh sir are planning that maybe we'll start crash batch. In case we start, maybe I'll give that strategy in over there. अभी कैसे बता सकते हैं पूरा का पूरा? एक मैसेज है सर, what about the case law? Like, let me be very honest. In and all, you have around 20 important case laws. Okay, especially in Companies Act and Contract Act. Companies Act के अंदर आपको 2-3 case laws आने ही चाहिए. If I happen to say them, let's say Salomon versus Salomon, वो आपको सर आना ही चाहिए. Then we have Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie, वो भी आपको आना ही चाहिए सर. Doctrine of Ultra Vires, वो भी आपको आना चाहिए. Contract Act के अंदर again we have few important case laws, जैसे मोहिरी बीबी versus धर्मदास घोष, minor वाला, सर वो आपको आना चाहिए. Lifting of corporate wheel के अंदर you have many 5 case laws.
कुछ कुछ केसेस आपको आने चाहिए, I'm not saying all of them, but maybe you know the important ones. बस उतना बहुत हो गया. चल, बहुत सारे मैसेज है, मैं इतने सारे मैसेज कैसे पढ़ूं? Around 50 messages. Sir, which section would be better write in paper 2, law or BCR? It is completely subjective matter. If you think your law is better, then you ought to be starting from law. आपको लगता है आपका BCR better है या BCR से start करूंगी? If I was, you know, at your place, अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं start करता law से. The reason is giving the law का writing the law का paper needs brain, and BCR is more about, you know, the speed. तो स्पीड तो बाद में इंक्रीज हो सकती है, but how can you make your you know brain run faster towards the end of the paper? So I would obviously attempt law first because the brain is very active, and towards the end when it's BCR, you know, I can generate a faster speed. So BCR बाद में, law पहले. This is I would suggest. बाकी it is a subjective matter, to be honest. Regarding schedule of crash course, the schedule of the crash course will be posted in the Telegram, YouTube, as well as you will receive the emails, so that don't worry about the schedule. Schedule will be sent to you by email. It will be sent on the Telegram channel, and it will be also shared in the YouTube channel of the Satara WICASA. Link for Telegram channel is already there in the Linktree link. There have been many questions asking with regards to the format of you know, writing the answers. They, to be very honest, what you need to be doing is dividing your answers in 3 parts. The first part would be facts of the case. मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का आप समरी करके आप फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे. ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया. फॉर दैट यू गेट 1 मार्क्स. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करने का 1 मार्क मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? दैट इज यू आर टेलिंग द पेपर चेकर दैट सी आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट part is you write all the provisions, maybe the sections that are getting attracted, maybe the case laws that are getting attracted, the main provision that is over there, everything you write in the middle part of the answer, that is provisions. And lastly you write the conclusion, that based upon the facts of the case and the provision you mix and match them and finally decide upon the conclusion that you have to say. So हम 3 part में divide करेंगे law के answer को. I think it is very simple, we know all this already. Sir, I'm not confident in Companies Act and partnerships. So can Indian Contract and SOGA help me to pass? If you just happen to do, you know, Indian Contract Act and Companies Act, आप pass के बहुत करीब पहुंच जाओगे. And after that, I do think personally that Partnership Act and LLP Act, they are very easy topics. LLP तो सिर्फ 12 पेज का चैप्टर है यार. तो I think ये 4 भी स्मार्टली कर लेंगे ना, तो भी हम आराम से, you know, we can cross 60 में से आराम से 35-40 आराम से. Maybe Sales of Goods Act towards the end, but Contract Act has to be the first chapter, then Companies Act, then Partnership, and then LLP, and last में Sales of Goods Act. This is what my you know, the sequence would be. Yes, RTP MTP का solving will definitely help. Yes sir, definitely. Solving MTP and RTP will help you a lot. Sir, how do we revise law in 1.5 days? See, it's like you are revising, right? So I'll obviously be doing the important chapters first. जब मैं exam देकर आया, that time I have fatigue. तो उस time मैं कोई light topic उठाऊंगा. A light topic like partnership, LLP, or maybe Companies Act. The next day when I'm fresh, I'll take up a, you know, a more difficult topic or maybe a more important topic. Let's say Indian Contract Act and let's say Sales of Goods Act. So this is how you manage, you know, in this 1.5 days. But sir, case law question में case law नहीं लिखने होते ना. If you happen to remember the case law, you obviously write them in the paper ना. Obviously you write it. Sir, please tell about timely completion of paper. Sir, practice is all you need. Sir, if you write wrong section but write correct provision, so we'll get mark. You will lose mark as far as writing the wrong section number is concerned. So if you're not confident with the section number, don't write. ठीक है, हम लोग इसको फाइनेंस में हेजिंग बोलते हैं. ठीक है, क्यों फालतू में रिस्क लेना है. ठीक है, डोंट राइट इट. Maybe just the provision and that's it. Sir, if BCR is done but very less in law, how to prepare? BCR हो गया है, मतलब I'm expecting आपके 40 में से 28.
अब आप बोल रहे हो सर लॉ में कैसे करें? आई एम टेलिंग इट अगेन वन मोर टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट, इट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्मॉलर चैप्टर। सेम गोज विद पार्टनरशिप एक्ट एंड देन एलएलपी। maybe these are the first 3 chapters in law that you should start with, अगर आपको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। So is it necessary to prepare notes? Or can you do from module only? Module is sufficient. Module is the best thing that you can have. ये सुशी के सर आप कुछ बोल रहे थे? There was one question to the Darshan sir. Accounts में कुछ BCR BRS में प्लस माइनस अप्रोच कुछ तो यूज करना था। Yes, you can do the plus minus approach. That's not an issue. Yeah. And during Darshan sir session, it was not visible on YouTube. So can you please repeat? Yeah, definitely. I just told that you have to revise a chapter, and which I am telling you. First, you have to revise the module 2. And so how you revise? You just go through with the module. First, you have to start the module. कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल का छूटना नहीं चाहिए, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो अपने को नहीं आता है। The first thing you have to do that, because we can say from the May 2018 when a CA foundation syllabus came, almost 95% questions are asked from the modules. So basically, what student need to do, just go through with the module. Once the module has been completed, कि अपने को सब कुछ आ रहा है, then you have to start with the past papers, RTPs and mock test papers. And when you do that, definitely आपको कुछ नहीं करना है। And when लगता है कि मेरा सब कुछ हो गया, I done with the past papers, I done with the modules, I done with the RTP, no need to go with the other sources. You just repeat regularly, and you have to repeat a module also again and again. And definitely, I just need to say one thing: you have to revise each and every subject at least minimum 3 times. If you are doing that, definitely you will get a success, because when एक ही बार करेंगे, you will कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएंगे. But when we do with the second time, तो मतलब there are so many chances कि अपने को retain रहता है. And if you do regularly, because if you revise regularly, कुछ याद रहेगा. And एक और doubt था कि सर practice करना जरूरी नहीं है. तो my answer always be that, and even each and every faculty answer will that practice वही एक चीज है जो आपको सीए तक लेके जा सकता है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज एग्जांपल समझाऊंगा कि सपोज मैंने किसी को बोल दिया कि आपको बाइक सीखना है, एक काम कीजिए, बाइक में एक क्लच रहता है, ये गियर सिस्टम रहता है, आप दबा दिए चला लोगे, दैट इज द ओरली पार्ट। बट सर अब लोग सीख नहीं पाते बिकॉज आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू विल लर्न। तो एक वो था। एंड सेकंड डाउट, सो बेसिकली और तो कोई अकाउंट में ऐसे इतना कोई डाउट्स है नहीं है, बट अगेन अकाउंट के लिए मैं ये बोलूंगा, फर्स्ट आपको मॉड्यूल 2 के चारों चैप्टर्स और ईच एंड एवरी 4 चैप्टर्स कंटेन आपका 15 मार्क्स, तो 50 into 4 अराउंड 55 to 60 मार्क्स आपको मॉड्यूल 2 से मिलने वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन मॉड्यूल 1 आई विल हाईलाइट द चैप्टर फर्स्ट बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेकंड वन आपका रहेगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद में आपका रहेगा सर एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दीज आर द 6 चैप्टर जो आपको प्रॉपर्ली करने। नो यू कैन नॉट लीव पार्टनरशिप अकाउंट, you cannot leave, because if you leave you will definitely lost 10 to 15 marks. So if you lost 10 to 15 marks, 85 marks के पेपर में से फिर there is a difficulty कि आपको बहुत difficulty आएगा, because partnership act is not a difficult chapter. Yes, just a second sir, I am also receiving theory in account. So basically I will say that in chapter 1 you have to revise the theory, and apart from that in practical chapter, rest we can say company account, partnership act, you don't need to revise the theory, because where your concept is clear, then you are able to solve the theory questions also. So first you what need to do, you just need to clear your concept. सर पार्टनरशिप में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो एक ही है कि आपके सबसे पहले फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एंड आफ्टर दैट आप पार्टनरशिप अकाउंट को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। एनपीओ नहीं, यू कैन नॉट लीव द एनपीओ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल, यू कैन नॉट लीव मॉड्यूल 2। यार मॉड्यूल 2 में यू हैव 4 चैप्टर, एंड वो 4 चैप्टर आपको 50 to 60 मार्क्स देंगे, तो यू कैन नॉट लीव, यू जस्ट नीड टू परफेक्ट इन मॉड्यूल 2।
BRS is very difficult. So basically, you just need to go through with the concept, and definitely 𝐒𝐶𝐂𝐂 sir will keep the crash course, so you can join them and you can clear your doubts and concept also. One more query is there. Do we get stepwise marks in Yes, accounts yes. especially? Yes, definitely we will get a step mark, because I can talk about the final account. So in final account, if the 7 to 8 adjustment has been given, and if I solve the 6 adjustment, or I solve the 5 adjustment, definitely I will get a marks. So yes, you can get a stepwise mark also. Okay. And I request, instead of putting in the chat box right now, if anybody has any queries, so raise your hand and we will allow you to unmute yourself. Also, query to Vishwana Sharma sir, does handwriting bothers matters in BCK BCR? Sir, you are on mute. It won't matter in BCK because BCK is more of a MCQ based paper. It will matter a bit in BCR because यार इतना तो legible writing होना चाहिए कि paper check को समझ में आ जाए. It cannot be too bad. I would suggest you, in case your writing is bad, because even my writing is bad, in case your handwriting is bad, what you need to do is start the question from a new page. Every question should be started from a new page. That will make your paper look presentable. Even though the handwriting is not that good, but it will look make your paper look more presentable to the paper checker. So start a new question from a new page. That is what I would suggest. And writing हो सके जितना अच्छा कर सको उतना कर लेना यार. Marks नहीं कटेंगे, but it should at least be legible. It should be readable to the paper checker. Okay, sir. Bapre. Riddhi Thakkar, unmute yourself. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, Riddhi, your query, please. Sir, I have doubt related to maths. So we can take it up later on. Jitendra Tansar will be Okay, joining. sir. Okay, Yeah. and what is Any your other? YouTube channel? YouTube channel, sir? Satara WICASA of ICAI. Okay, okay, sir. Okay, okay. Thank you. Yeah. Abhishek Jha, unmute yourself. Hello, sir. Yeah. Hello. Sir, good evening, sir, ma'am. Sir, since 2.5 months I was ill and I was not properly attended, and this will be my third attempt. So, sir, now I started like seriously studying. So, what should I do next? I started the important topics of every subject, but I don't know what I should do next. I'm confused. I think his query was not clear. Abhishek, can you repeat? Sir, I told that since 2.5 months I was not ill. I was ill and I was not properly attending to classes and revisions like all that and that. And now I started, and what I should mainly now I started the main important topics. But still I'm confused of what I should do next. I think Abhishek, crash course can take care of that, right? I mean, those students who don't know right now what to do, I mean, they can get benefited out of this. Yes. जितना मुझे मालूम हुआ है उतना आपको समझ में आ रहा है कि अभी 1 महीना बाकी है, तो उसमें अगर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू गेट कवर? करेक्ट ना? ये सर अभी मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन पिछले 2 महीने से मतलब 2-2.5 महीने से मतलब उतना ठीक ठाक चल रहा था, मतलब कर रहे थे पढ़ाई, इतना ठीक ठाक से नहीं चल रहा था। और अभी क्या, अभी PYQ सॉल्व करे या फिर MT सॉल्व करे या फिर मॉड्यूल सॉल्व करे, इसी में मतलब पूरा उलझ गया हूँ। Okay, so for that you can attend crash course. You will get comprehensive coverage in limited time. Okay. Tanvi Maheshwari, over to you. Yes, sir. Sir, I have a query in I have a query in accounts that
um, no, in law that we accord what is the criteria of direct questions and case-based questions? Most of them are case study based questions in which you need to apply the law, because we at ICAI don't believe कि आप mug up करके आओ और उसको as it is copy करो. It's more about application of what you have read. So most of the paper will be a case study based question, and maybe a few of them will be straightforward theory questions, but lesser of them. Most of it will be case study based, ma'am. Okay. Okay, sir. Sir, 12th exams are also going on. So how can we revise the course three times? You just need to bifurcate your time. कि आप 12th को कितना टाइम दे रहे हो और CA फाउंडेशन को कितना टाइम दे रहे हो. I would suggest जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है आपका वो आपको 12th को देना चाहिए. ठीक है, maybe half the day, and the other half of the day आपको CA फाउंडेशन को देना चाहिए. You just need to plan out properly depending upon preparations of yours. कि आपका 12th का कितना सा प्रिपरेशन है या फाउंडेशन का कितना सा प्रिपरेशन है. You just need to allocate the time in such a way that it's a win-win situation in both the places. Okay, sir. Before going to Anchal, there is one question from Pavitra. Will we lose marks if balance sheet doesn't tell? Yes, sir, definitely. You will lose marks if balance sheet. But again, I already said that you will get the marks by step. And if you did the hard adjustment, then you will get a great marks. And if you doesn't did, then obviously you have a problem. So if balance sheet doesn't tell you, definitely marks will reduce. Anchal, unmute yourself, please. Good evening, sir. Yes, Anchal. Sir, I have a doubt in accounts. Yes. Sir, there are some chapter like depreciation, inventory, and sale of goods. Is that necessary? Yeah, definitely. I will say that all chapters are important. So you have to once go through with all the chapters. But I just put the chat box in the important chapters. You can't skip. Like I already posted in the chat box also. I will repeat. First, module 2, all chapters from module 2 you have to do perfectly. And apart from that, if I talk about the module 1, then you have to go through with the rectification of error, bank reconciliation statement, and apart from consignment account, the current account, average due date. These are the chapters you have to do regularly. And apart from that, whatever the chapters, we can say the theory chapters number 1 and depreciation, journal entries, subsidiary books, cash book. You have to do that also, because you cannot be sure that what question will be asked in the question. So asking the exam. So basically, you have to go with it. Once you have to go through at least one time. Okay. Sir, I refer past question. Yeah. And then, sir, they are true and false with the reasons. But for which true and false? Yes, sir. Sir, Yeah, definitely. You cannot just write the true or false. You have to go state your reasons and what the statements are true or false. So basically, once you start with the true and false, you have to put down your reasons also. Okay. Then after you will get a marks. Sir, we have to refer a question, but there is a reason behind them. No, but you have to put the reason also, because you cannot get a 2 marks or 1 marks by just putting a reason, by just putting a true and false. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Welcome. Daksha Jain, what do you? Yes, good evening to all the faculties. Sir, I have a query related to law, BCK and economics. Go ahead, please. Sir, in the law, if we write the case law and if we not explain the case law, does we lose any marks? You just need to write the name and summary in 3 to 4 lines. That what is it that happened in the case law? Just maybe 3 lines. That is it. And then you come back to the question that is there, जो आपको answer करना है. You just need to write down the case law, the name of the case law, and maybe in brief 3 lines. That is it. And you can go ahead with answering the main question. Sir, like in the Salmon versus Salmon and in the Companies Act, but the you need not write that pound 37,000 pound, 38,000 pound के अंदर से
हमने शेयर्स दिए, सिक्योर डिबेंचर्स दिए, बाकी 7 हमने कैश दिया, वो सब नहीं लिखना. What you need to write is that okay, 3 lines के अंदर this is what happened. There was a single person doing the business, then he converted it into a company, and the final judgment was that Solomon is different and the company is different. Okay, sir. 2 to 3 lines. जो भी मतलब summary. इंडोर मैनेजमेंट में जो भी इतने बड़े केस है, उस समरी में 3 लाइन्स में लिख सकते हैं. इंडोर मैनेजमेंट में कौन सा टर्कॉन रूल है ना, टर्कॉन. हाँ, टर्कॉन रूल. हाँ, उसमें I'm again saying we just write the name of the case law and maybe just 3 to 4 lines. 3 to 4 that's lines. it. Yeah, that's it. Yeah, sir. Thank you. And about the BCK, sir, is the ICAI model questions are enough? Like to definitely not. If you just happen to go to the website of ICAI, you'll find in over there mock test papers, especially the 2 of them, the latest ones. Apart from MCQs of ICAI, आपको वो भी कर लेने चाहिए. And any other source from where you can find the questions, MCQs, you ought to be doing them, because just reading the chapter and doing the MCQs that are given after the chapter are not sufficient. No, like how will you judge yourself that you have the grip over the chapter? You can only judge it by doing multiple MCQs, and for that you obviously need to go to the website of ICAI and solve the MCQs. In case we have a session of BCK flash batch, in case we have it, then maybe around 500 MCQs is what I'm planning in this batch. Around 500 MCQs. Let's see. Not very sure. Yeah. Okay. Thank you, sir. Dakshajan, any more queries? No, sir. That's it. Okay. Before going to Aryan, now I want to ask general query that is there any major significant changes in the module of November attempt and right now May attempts? No, sir. In accounts, only past papers questions were added in the current model. Apart from that, there is no significant changes. Okay. Even in economics also they added just additional MCQs at the end of the each chapter. That's it. Okay. And if there are any amendments, if there are any additions, you can get it in the ICAI website. Yes. Latest modules are available on the ICAI websites. You can download them. Aryan, over to you. Sir, now my 12th exams are finished, sir. I am giving November attempt, sir. How can I cover all the subjects, sir? In just 5 months, November attempts. Yeah. 5 months are enough for you to start. Don't worry. Start slowly and then gradually, take up the speed. You can start maybe from accounts and maths, because they are humongous topics and humongous subjects. Along with them, maybe when you get too bored by doing accounts and maths, you can take up maybe a 3 subject like BCK or maybe economics or maybe BCR. You have ample time. 5 months are enough for clearing CA foundation. So don't worry. I guess it should be a cakewalk for you, in case you are serious. Yes. Sir, in law sections also have marks, sir? It is just that if you happen to write the sections, you will, you get a good reputation in front of the paper checker. Ki, हाँ यार ये बच्चा पढ़कर आया है. The student has worked hard, and that they maybe some brownie points. It is not that if you don't happen to write the sections, they will cut your marks. No, it is not like that. I'm saying it is just that it will give brownie points or maybe a few extra marks. Playing with the psychology of the paper checker. Ki, हाँ यार बच्चा अच्छा पढ़कर आया है, and maybe getting few extra marks. That is the maximum you can get. Sir, what's the last strategy until the 1 month, sir? 1 month में आप सब भी फिर से कवर अप करना रिवीजन, सर, लास्ट 1 month के लिए. Last 1 month के लिए. By the time you're in the last month of your exam, obviously you have marked up things in your module that what are those topics that you're not confident with, or what are the topics you again need to revise, and maybe some MCQs that you are not very sure about. You only need to be going through those topics and those MCQs, because you need to be having a lot of confidence in the last 1 month before your exam. So just keep on marking things that okay, this concept of mine is a bit dicey, maybe I need more clarity in this, and before 1 month all you need to do is get it more clearer. That's it. Yes, sir.
Thank you, sir. Yeah. Yash Kumar, any queries? Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Okay, sir. Actually, I am a regular college student, and time nahi tha, so I started preparing from 1 month before. And मेरा maths हो चुका है, stats, LR, everything, and accountancy, except consignment and final accounts. I have completed the syllabus of accounts also. Economics is almost complete, and now law is remaining and BCK is remaining. So what should be my strategy from now onwards to clear this May attempt? BCK should not take long, to be very honest. If you just happen to give 2 hours daily or maybe 2.5 hours daily early in the morning to BCK, it will be done in 1 week, to be very honest. Just 2.5 hours early in the morning and BCK will be done in just 1 week. With regards to law, you need to be a bit smarter right now because maybe 1 month is not enough to finish up the whole law. Start with Companies Act, move towards partnership, then LLP, then Contract Act, and then finally Sales of Goods Act. Although Indian Contract Act is the most important one because it has the highest weightage, but given the size of the chapter, maybe पूरा chapter भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा chapter है. So act smart, finish up Companies Act, then LLP, then partnership, and then start with the Indian Contract Act. This should be the strategy, sir. Yeah, thank you, sir. Actually, sir, in Indian Contract Act, I have done the 3 units out of the 6 units. Okay, the basics and then consideration and all those. Yeah, 3 units mein kar chuka. So like, they have weightage or not? I have to do the rest 3 units also. So I think the main important ones, the most important is unit 1 and 2 only, that you have already done. So you should be feeling more confident that okay, I've done the tougher part. What remains is the next units, 2-3 units. They are very simple. They are very much shorter also in size and easily graspable. So don't worry much. It will be a cakewalk. Any how I should revise and any sample papers and mocks, how much should I give? Come again, sorry. So kitne mocks वगैरह मैं दूँ अभी revision remaining? The first focus should be obviously completing the syllabus first. Mock test is 100% important, but what is right now more important is you should be at least finishing up the syllabus first, right? Then only mock will make sense. If you just haven't covered the syllabus and you appear for the mock, you're wasting time in the mock paper also. So better finish the syllabus and then maybe 1 mock at least, I would say. Oh, okay. Yeah, sir. Got it. Thank you so much, sir. Yeah. Is black gel pen allowed? Black pen is allowed, maybe gel pen or maybe ball pen. I would just suggest make sure if you can just have it with a ball pen. Agar possible ho and aapko comfortable hai, you should be writing with ball pen. Obviously, gel pen is allowed, but ball pen se likhna chahiye. That is recommended. Yeah. Archan Mishra. And before going to Archan, crash course will probably start from 29th May. We will be sharing the whole schedule through mails and through YouTube. Jitendra sir is facing some technical problems, hence he is not able to join. We will try to wait for a few minutes before he joins, and if not, we will get a separate session of him. Archan Mishra, over to you. This session is available on YouTube, Satara WICASA of ICAI YouTube channel. I think Archan Mishra is not there. Anshika Jha, your query, please. Yes, sir. Sir, am I audible? Yeah, you are. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पेपर 1 to 4 है ना, जितने भी है मैंने वो सारा का सारा थोड़ा थोड़ा कवर किया है, ठीक है, बट स्टिल जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि मैं भी 12th क्लास स्टूडेंट हूँ, तो मुझे 12th भी पढ़ना है, मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं,
तो मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मुझे अभी ये क्लियर करना है तो फिर अभी मुझे क्या मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना चाहिए? और मैम जो जैसे मैथ्स और स्टैट्स है ना, उसमें मैंने देखा था जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हो गया या टाइम वैल्यू मनी, तो मैं वो सारे करती हूँ, बट एट द लास्ट ना सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो टोटली डिफरेंट तरीके से आ जाते हैं, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता। Sir, I think you are muted. Hello, am I audible? Hello? Yes, ma'am. Okay. Oh, sorry, I didn't. Yes, ma'am. Yeah. So what I was saying, I think in whatever question you asked about maths, I think sir will be in a better position to answer कि वो जो jumbling topics का होता है. But I can tell you about other things. कि आपका जितना भी नहीं हुआ है, but every professor has told you, right? कि what are the key aspects of each subject. So first focus on that. Try to, it's always about 80-20 rule. Like आपका 20% chapters रहते हैं जो इतने सारे important रहते हैं जिससे 80% चीजें आसानी से clear हो सकती है, connect हो सकती है basically. That works for economics. If you know the concepts, it is easy for you to overlink the different chapters, and फिर previous year के papers से आपको ज़्यादा idea आएगा कि कहाँ क्या होता है. So first thing I think you should be doing is that first take all like previous year papers of all the subjects, do your analysis. उसमें आपका जो strength and weaknesses है उसको उसके साथ correlate करो. Like in accounts, if you know कि okay 4 chapters में you have better understanding or conceptual clarity, then go for that first rather than focusing on covering everything right now. I mean, even if you get like 100% efficiency in 80% of your portion, you will be able to clear the exam. But for that, you need multiple revisions and most importantly, practice. I mean, you need to solve at least 2 mock tests, full-fledged time-bound mock tests. I hope your query got resolved. Like, if there is anything I can help you with. Sir, am I audible? Yeah, you are audible, but I think Anshika is not audible. Yeah, it seems. She needs to unmute. Ma'am. Yes. मैम इसमें म्यूट हो गई थी वो मेरे सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं था, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक तरह से, क्योंकि सभी का थोड़ा थोड़ा हुआ है, तो अब फिर मेरे को लग रहा है कि पता नहीं क्या है, थोड़ा ओवरलैप होगा because that's why I said in the early only कि try to correlate chapters. Don't study any particular chapter in isolation. In accounts, you are going to there will be multiple terms which are going to come multiple times. So you need to be in a position to make sure कि okay ये चीज वहाँ कहाँ पढ़ी थी, इतना भी याद है तो भी you can go back to that particular chapter, you can refer it back. Don't just think okay we'll do it at later stage, because वो later stage कभी नहीं आता. So try to focus on current and overlapping का जो आपको जो query anxiety हो रहा है ना, that you can overcome with the help of revisions. Because when you will revise same thing 2-3 times, next time when you will be reading the same thing, you will at least be able to in a position to recollect 50% of things, and that will boost your confidence. I mean, is there anything else you want to ask? Anshika, is your query resolved? Anshika? Yes, sir. Yes. So एक चीज और, yeah. जैसे लॉ में ना जब आंसर्स लिखते हैं तो उसको बताया था यूट्यूब पे, हर कोई अलग तरीके से बताता है. कोई बोलता है कि पहले क्वेश्चंस के फैक्ट ऑफ द केसेस लिख के और फिर एनालिसिस लिख के लिखना है, या फिर कोई सिर्फ ये बोलते हैं कि पहले प्रोविजन और फिर एनालिसिस और देन कंक्लूजन. तो कोई एक फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है कि जिसमें हम लिख सकते. Like fact of the case or analysis is one of the same thing. Thumb rule as such. There's no thumb rule as such that this should be first, this should be first, and this should be first. Yes. It is more of a coherence thing that okay, I'll first obviously write the fact of the case and then the provision, then the conclusion. This is more coherent, more logical sequence. Okay. Even if you happen to jumble up things, maybe writing the provision first and maybe then the fact of the case and maybe then the conclusion, it doesn't matter. It won't affect your marks by even 0.5.
because Yes. what matters to ICAI is your concept. If your conclusion is perfect, if your analysis is perfect, provisions are perfect, you will anyway get marks. It is nothing to do with the sequence of the paragraphs. So don't worry about that. Yes. And sir, for accounts, वो मैंने previous year का answer sheet देखा था YouTube पे. सर उसमें ना जो questions थे वो ज़्यादातर अलग chapters से थे like inventories या consignment से. Partnership जो हमें पढ़ाया गया था वो पूरा बहुत सारा बड़ा part है book का, लेकिन उसके बहुत सारे कम questions थे. तो अभी तो मैंने वो किया नहीं है, तो अगर मैं अभी भी start करूँ तो वो हो जाएगा along with maths, क्योंकि फिर maths का बहुत सारा part छूट जाएगा. Logical reasoning मैंने किया हुआ है, वो मेरा पक्का हो चुका. That's all, ma'am. Archan Mishra, over to you. Hello. Hello. Yeah. Hello. Sir, am I audible? Yes. Actually, sir, my query is, I am from non-math background, so how to prepare for mathematics? Mathematics session, sir is joining in 5 minutes. We will have a separate session for that. Okay, sir. Okay, thank you, ma'am. Bhavesh, over to you. Hello, sir. Good evening. Yeah, good evening. सर मैं इसके पहले अटेम्प्ट में अकाउंट्स में मतलब क्लियर नहीं हो पाया अकाउंट्स को ऐसे, और सर मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक है ऐसे, इस वजह से मैं अभी प्रिपेयर भी हुआ नहीं उतना. सर अभी 1 मंथ बचा, उसमें मैं क्या करूँ जिससे मैं अकाउंट्स में पास हो जाऊँ. अकाउंट्स तो एक काम करो, अकाउंट्स में मतलब आपको जो मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर दिया ना वो एक बार अच्छे से कर लो, बिकॉज अकाउंट प्रैक्टिस मांगता है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा उसके लिए. तो जस्ट मेक श्योर कि अभी 1 महीना बाकी है, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट टेक 4 to 5 hours in a day or 5 to 6 hours, just do the account and make sure आप एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज कर लो, ठीक है, विद योर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, फर्स्ट जो रीडिंग रहेगा ना आपका वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यानी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हैज टू बी गो थ्रू इट. एक बार हो गया, फिर आप सेकंड टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार कर लो एंड पास पेपर से वो एक बार कर लो, बट टाइम आपको देना पड़ेगा. और मैंने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स खोले हुए हैं, तो वो आप चैप्टर्स कर लीजिए. तो डेफिनेटली अकाउंट में पास तो नहीं, आपको मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, बट आपको कम से कम 2 बार तो अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा. ओके Sachin Sabre. हेलो. Yeah. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जो अकाउंट के रिलेटेड था. Yes. हाँ सर, तो एनपीओ जो हमारे चैप्टर है मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मतलब जब हमें कोई सब्सक्रिप्शन या कोई सैलरी जो भी हमें कैलकुलेशन करना होता है, हमें मतलब सिर्फ अकाउंट ही बनाना चाहिए या प्लस माइनस करके दिखा सकते हैं हम? नहीं, आप वर्किंग नोट्स में प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस जस्ट मेक श्योर कि एनपीओ में जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में सब्सक्रिप्शन लिखोगे वो आपका करेक्ट होना चाहिए. उसका आप नोट वर्किंग नोट में प्लस एंड माइनस करके भी दिखा सकते हो. देयर इज नो नीड कि आपको सेपरेट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है. ओके सर, एंड देन प्लस मतलब हम ये से भी कर सकते हैं, मतलब 2 कॉलम बनाकर मतलब इनर यस कॉलम यस में यस प्लस यस माइनस यस करके. यस यस यू कैन और डेफिनेटली गो विद उसके बाद द. ओके मतलब सर ऐसा भी कर सकते हैं मतलब सिर्फ सिंगल कॉलम मतलब ड्रॉ करके और एडिशनल वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दिया, फिर वो डायरेक्ट अमाउंट मतलब आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं सिर्फ एक कॉलम में. देखो फॉर मी मैं मतलब यही बोलूंगा कि मतलब यू जस्ट गो विद द वर्किंग नोट, whatever you are computing वो आपको वर्किंग नोट में बताना है, एंड जो फाइनल अमाउंट है वो आपको वहां पे. देखो आंसर जितना कंसाइज होगा ना अकाउंट में और वर्किंग नोट जितने अच्छे होंगे आपको मतलब वो आराम से पढ़ लेंगे एंड डेफिनेटली विल गेट अ मार्क्स. तो सब्सक्रिप्शन का जो रहेगा वो आपको वर्किंग नोट में पूरा कंप्लीट कर लीजिए एंड देन आफ्टर आपको फाइनल अमाउंट है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता दीजिए. ओके देन वर्किंग नोट की रेफरेंस देने पड़ेंगे ना वहाँ पे? हाँ, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा नोट 1, यानी आपने कौन से वर्किंग नोट में उसको सॉल्व किया है. यस सर.
देन प्लस सर वर्किंग नोट हम जब बनाते हैं वो हमारे जैसे हमें लगता है हमारे जैसे मतलब हमें काउंटिंग करने में सही लगता है वैसे बनाने या कोई अलग सीक्वेंस हाँ में नहीं मतलब। आप बना सकते हो, मैं यही बोला कि अल्टीमेटली बस बनाइए ऐसा कि सामने वाले को समझ जाए। ओके, जैसे व्हेन यू आर डूइंग प्लस माइनस तो आपको डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना है। जैसे आपने किया प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, तो व्हाटएवर करंट ईयर 1920, तो यू शुड राइट 1920। and you are reducing your past year subscription, then you have to less outstanding subscription for 18-19, so your description should be correct. Okay. Okay sir, then there is having the doubt about the law. Yes, Vishwan sir. Hello. Yes, speak. Yeah, tell me. Yeah, continue. हाँ सर, लॉ में मतलब हमारे मतलब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ मतलब हमें जो फैक्ट लिखने होते हैं या सभी क्वेश्चन को हमें एनालाइज करके लिखना होता है फैक्ट में, या सिर्फ मतलब जो you भी just need to write इम्पोर्टेंट। the summary of the whole question। मतलब अगर 7 लाइन का क्वेश्चन है तो आप उसको 3 या 4 लाइन के अंदर समराइज कर दोगे, मतलब जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, that is it of a fact of the case। बाकी will focus morely upon the provision and finally the conclusion। ओके ठीक, थैंक यू सर। Yeah। Rohit Sinha. Hello। And until then, yes, please। Good evening, sir। Yeah, good evening. Sir, is it okay if I am speaking Hindi? Absolutely। सर एक्चुअली ना मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बस मेरे पास मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, उसकी वजह से सर जो बीच के जो 2 चैप्टर है, एक है डिमांड एक सप्लाई, ये सर मेरा पूरा छूट गया है। तो सर क्या मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए अभी या फिर ये मैसअप हो जाएगा? विश्वनाथ सर, मिताली मैम। Hello। Yes, ma'am। Can you repeat your query, please? मैम एक्चुअली मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मैं रिवीजन पे हूँ अभी मैम। तो मैंने आरटीपी एमटीपी मैम मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बट मैंने जो इकोनॉमिक्स का जो मेजर चैप्टर था वो थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई, वो मैंने बीच में स्किप कर दिया था ये सोचकर कि मैं लास्ट में करूँगा। बट अभी इस टाइम पे मेरे पास मतलब मैं मैसअप हो रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पा रहा। तो मैम मेरे को अभी स्टार्ट करना चाहिए या फिर कुछ अलग ऑप्शन हो सकते हैं मेरे लिए? See, basically theory of demand and supply तो बहुत important है, क्योंकि उसमें से आप देखोगे तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आने वाले, राइट? So you have बाकी का आपका पूरा हो गया सब रिवीजन, so now आपके पास अभी जो टाइम है you can invest it, आप वो चीजों को कर लो। प्लस अगर आपका 11th 12th कॉमर्स बेस्ड है तो आपको वो भी बेसिक रहेगा, so you must be knowing basic concepts की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो try to focus on that and elasticity वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए यू कैन मेक अ चार्ट। 5 टाइप्स का जो इलास्टिसिटी है, कब किसका 1 होता है, कब किसका इंफिनिटी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ वेरी हो सकता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या हो सकता है, कंपोजिट गुड्स का क्या हो सकता है, जॉइंट डिमांड कब है। ये चीजों पे कंसेप्चुअल फोकस रखो रादर देन रीडिंग एवरीथिंग, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को थोड़ा देखोगे ना अच्छे से, तो वो फिल्टरिंग आउट से आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां आप फोकस कर सकते हो। I hope your query got resolved. Yes ma'am। And sir मेरे लॉ का भी एक डाउट है और अकाउंट्स का भी एक डाउट है। Go ahead। सर मैंने अभी अकाउंट्स का जो रिसेंटली एमटीपी आया था मई 22 का, वो मैंने सर पहले तो मैंने बिना बुक्स को देके सॉल्व करने की कोशिश किया था, तो उसमें सर मेरे को बहुत टाइम लगा था, अराउंड 4.5 आवर्स लगा मेरे को पूरा सॉल्व करने में, और उसमें आंसर्स नहीं आए। तो मैंने एक और बार रिवीजन किया, फिर भी सर टाइम मेरा 3 आवर्स में नहीं फिट हो पा रहा। तो बेसिकली मतलब आपका अकाउंट का प्रिपरेशन कैसा है, प्रिपरेशन किया कैसे था? सर मैंने सारा स्कैनर से करा था, मतलब विद रिटन प्रैक्टिस। सॉरी स्कैनर करा हूँ मैंने, सारे मॉड्यूल से करा था। पहले मैंने मॉड्यूल 2 कंप्लीट करा, फिर मैंने मॉड्यूल 1 करा, फिर लास्ट में मैंने बिल्कुल थ्योरी रिवाइज कर मतलब थ्योरी पकड़ा था। बराबर। और कितनी बार रिवाइज किया था मॉड्यूल पूरे? सर मॉड्यूल मैंने रिवाइज किया है 2 बार, भी मुश्किल से। मॉड्यूल 2 मैंने 2 बार रिवाइज किया, मॉड्यूल 1 तो मैंने बस 1 बार करा है। अच्छा, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 बार करा है। और मतलब कितने बार प्रैक्टिस कितने बार किया था? मतलब मालूम है एक ही बार क्वेश्चन करके छोड़ दिया था, आपने 2-3 बार किया था उसको? सर एक बार तो मैंने, और जो मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, तो टीचर सीए इंटर के स्टूडेंट है वो, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया था मॉड्यूल 2, उन्होंने जब करवाया तो एक
फर्स्ट टाइम हुआ, दूसरी टाइम हुआ था कि जब उनके पेपर आने वाले थे मार्च के टाइम पे, उन्होंने कहा कि सारा रिवाइज करके मेरे को एक बार टेस्ट दे दो, तो फिर वो एक बार हुआ था। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट डू वन थिंग कि अभी है ना जो मॉक टेस्ट पेपर है बराबर, तभी आपका सब रिवाइज हो चुका है ना, तो एक टाइम ठीक है, एक बार फर्स्ट मैन विल डू अपना टाइम लगेगा बराबर, बट जस्ट मेक श्योर जो पास्ट पेपर्स है ना वो एक बार कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। जस्ट मेक श्योर योरसेल्फ कि 3 आवर्स का टाइम दो, करते जाओ, ठीक है। बस 3 आवर्स, ऐसा नहीं कि मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, चलो ना अपना ही घर है, अपना ही पेपर है बराबर, तो आधा घंटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा मत करो, 3 घंटे में आप कितना कर दो, जस्ट सेट योर टारगेट, बिकॉज जो एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है ना वो अपने घर पे नहीं होगा, ये फैक्ट है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, जो आईसीए का पैटर्न कैसा कि आपको 15 मिनट्स के पहले पेपर दे दिया जाएगा, यस, तो आपका भी वही रखो, 15 मिनट्स पहले पेपर ले लो एंड 3 आवर्स में उसको स्टार्ट कर लो। जैसे ही 3 आवर्स खत्म होते हैं उसको बंद कर लो, फिर इवैल्यूएट करो कि आप कितना अटेम्प्ट किए हैं। इफ यू आर अटेम्प्ट 90 to 95 मार्क्स, बहुत बढ़िया है। 100 किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जस्ट वो इवैल्यूएट करो, अगर नहीं होता है वापस सेकंड पेपर लेके उसको करते जाओ। डेफिनेटली आप रेगुलर करोगे तो एक टाइम आएगा कि आपका मतलब अराउंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले ही हो जाएगा, ओके। यस सर, यस, ये गाली करते जाओ। ओके सर, ओके। या ओके सर, लॉ में भी मेरी एग्जैक्टली यही डाउट है। मैं रिटन प्रैक्टिस बहुत कर रहा हूँ बट स्पीड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, पेस नहीं आ रहा मेरा। Maybe speed का problem है because we are not very confident with what we are writing. Yes, sir. Maybe you are thinking twice before writing the provision. What you need to know is, once I just happen to go with the whole of the question paper, analyzing कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. In case you feel कि हाँ आपको आ रहा है, then you should continuously start writing. And I don't think फिर आपको time लगना चाहिए. और maybe अगर time लग रहा है तो what you can do is, you always need to attempt your best answers first. You don't have anything like attending chronologically the answers in the exam. If you think that your question number 2 is better, start with question number 2. If you think your question number 4 is better, start with question number 4. आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 का A किया and 5 का B किया. Not like that. The whole question together. The whole of question 4, then question 2, then question 3. You can move it like this. So that will benefit you in a way that your best answers will be done first. You'll feel more confident. And वो जो आप बोल रहे हो ना कि लिखने में स्पीड नहीं आ रहा, वो स्पीड भी आ जाएगा because when you know something, you obviously tend to write it faster. Yes, sir. और सर जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, जैसे बहुत सारे उसमें आते हैं बीसीआर के टाइप को, बीसीआर के क्वेश्चन में बहुत हार्ड वर्ड्स आते हैं, उनके लिए कुछ है? Okay, I think you are referring to chapter number 3 and that is vocabulary. Yes sir. For synonyms, antonyms maybe आप refer कर रहे हो शायद. And sir passage में भी issue होता है. Okay, I'll be very honest with regards to vocabulary chapter. The first and foremost target should be that आपका जो ICAI का module है उसका हर एक क्वेश्चन एंड हर एक एक्सरसाइज आपको पहले हो जाना चाहिए. Okay. After that, the mock test papers that we have आपका वो हो जाना चाहिए. उससे फायदा ये होगा that you will gain confidence कि okay, I'm able to understand what they are wanting to ask. It will never be the case that the whole paper will be from the module, at least as far as BCR is concerned. You need to be going through new words as and when you come across them and knowing the meaning of them. That is the only solution. And don't worry, itne tough nahi aate hain exam mein question. Maybe you feel it tough because base itna strong nahi hai, but don't worry, it will be for 1 or 2 marks. That is okay. Focus on the other 38 marks na. Yes sir. Thank you sir. Yeah. Thank you Rohit. This will be the last question we will be taking from Chandan Thakur, and we will move on to mathematics session. And जिनके भी जो भी queries है, we can take it after the whole session. If sir are Vishwanath sir and Darshan sir are okay with it, is it okay? Good evening, sir. Sir, my doubt is related to law. I have completed all the 5 chapters, sir, but during revision time, it's difficult to grasp contract act. We have head points in consideration and all. Sir, is it compulsory to grasp all the 10 points or 20? No, it's not like that. I'm again saying, what at ICAI what we want is your concept should be perfect. We're never saying you that let's talk about section number 25, exceptions to consideration. Yes, We'll sir. never ask you कि आप सारे के सारे points note down करो.
कि बेलमेंट है, एजेंसी है, लव एंड अफेक्शन है. No, it will be a case study question in which you will be judged that whether you understand the provision or not. So it is never about mugging up all the head points and going inside it. It's more of a concept. ठीक है, आपका concept clear होना चाहिए and you can easily crack it. Theory questions होते हैं पर बहुत कम होते हैं. It's okay, sir. very much And doable. Yeah. sir, theory questions are related to which chapters? Means it is mostly focused on contract act or companies. We don't have any a paper pattern के इसमें से theory आएगा, इसमें से practical आएगा. Okay, okay. But what has been seen majorly is contract act में से and companies act में से हम ज़्यादा practical question पूछते हैं and even partnership में से ज़्यादा practical questions आते हैं. LLP because it is a smaller chapter, you do find theory questions from that chapter. But theory question can also be from companies act as well. ऐसा मतलब ऐसा कोई thumb rule नहीं है. Yeah, and so my last doubt is, sir, means can you, sir, help me in giving some importance in contract act? Means which all unit we have to thorough. The first and second unit are the most important ones. मतलब उसमें से it has been seen that more questions are there. But I'll again tell you, this is not BCom. There's nothing like important in CA. You just need to do all the topics. Yes, based upon trends, there may be few topics which are asked, more frequently. उसको लोग important बोलते हैं. मैं ऐसा कुछ important मानता नहीं हूँ CA के अंदर. But still, you can consider unit 1 and unit 2 to be, more frequently asked. That way important. And sir, ICAI doesn't look on the length of the marks, no? Length of the answer. Yeah, again I'm saying, length बड़ा करने से marks मिलेंगे ऐसा नहीं है, because this is not BCom. You need to be accurate with what you're writing, even if it's just a 1-page answer or maybe 75% of the page, but it is dead accurate. In that case, you happen to get the marks for sure. Yes, sir. So length won't matter. Don't worry. That's it. Thank you, sir. Good evening, sir. Actually, I doubt in eco. Miss, are we given working notes for the graphs, like in supernormal profit or in cost and production chapter? Like there are many graphs. So in exam, if question comes, are we allowed to draw in the question paper or working sheet? See, at such the thing is that जो भी आपके graph oriented questions रहेंगे, they give you their space in question paper where you can mark. But of course, that is not something which you should be doing for every question, because it is not really allowed working on your question paper. But slightly you can mark it, and then after whatever you have done, you can just clear it out. But yeah, and don't go and write everything on that graph. It has to be very skeleton of graph. Light graph, like. Yeah. And we have to erase it later on, right? Yeah, it is better if you erase it, because actually it is not something which will be written or encouraged by examiner. But yeah, if it is needed, you can use it. But most of the times, if you solve multiple graph-based questions, you won't be needing to make any working note. It becomes very habitual. So you need to practice graph-based questions more for that. Okay, miss. Yeah. And I would like to ask BCR sir, can he reshare the screen about the things he had written? I'll share it in the Telegram group if you want. Don't worry. WhatsApp पे भी हम send कर देंगे. Don't worry. Okay. Okay, sir. And sir, in maths, how many working sheets are provided in paper 3? For maths, you need to wait. The sir is just about to join the session. So just wait for maybe 10 minutes and you will have the query resolved. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. Jetu sir has already joined. We will take last query from Ankit Prasad. If he is there. Yes, sir. I am here. Sir. Yeah. सर मेरा मतलब मैथ से रिलेटेड है सर. है फिर छोड़ दो बाद में. और सर सुनिए ना. हेलो. सॉरी. या कंटिन्यू. सर आप बोल रहे हैं क्या ये जो पैटर्न रहेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो वो सीक्वेंसली लिखना है कि आपको जो आता है वह मतलब पहले कर सकते हैं? आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सब पार्ट्स हैं, A, B और C, तो वो तीनों आप साथ में करोगे. आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले करो, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करो. और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो ABC है
वो आपको फिर एक ही जगह पे करना है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। या Jitu sir, are you there? Until then, Kaushik. Hello, sir. Am I audible? Yeah. Sir, I have a doubt in law paper, sir. Sir, how to Doubt in law paper? Law. Okay. Yeah, tell me. Yeah. Sir, how to present the case study, sir? Can you explain with an example? Come again. How to present the case study, case law? Okay, I think you are asking how do we remember the names of the case law? Is it? No, sir. If they are asking the presentation of case studies. Yes, a presentation. How to present? Presentation of case studies. Okay. Got your point. What you need to do is, if you just happen to go to the question that has been asked in the examination, you will just write a summary of it at the beginning in the first paragraph of your answer. At okay, this is what the situation is. That is, you give the heading of facts of the case. Just summarize the whole question and write it in 3 or 4 lines. You'll get 1 mark for it. Then you move towards the provision that is getting attracted in that question. It may be a case law, it may be a section, whatever it is. You just write it in the middle paragraph. That is provisions. And at the end of the answer, what you do is you write the conclusion that, okay, based upon these provisions and based upon the fact of the case, if you mix and match both of them, this is what the conclusion, what we arrive at. And that's how you end your answer. The provision part has to be the biggest part of the amongst the 3 paragraphs. Fact of the case is the smallest, and even conclusion is a very small one. Provision wala paragraph is the biggest one. Yes, sir. Thank you, sir. Brunal. Hello, good evening, sir. Yeah. सर मेरा डाउट लॉ से रिलेटेड है. Yes, please. सर मैंने एक्चुअली लॉ को मतलब पहले इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं था, तो लॉ मेरा बहुत कम हुआ है. फर्स्ट लेसन के 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए पूरा, और बचे हुए जो 4 लेसन है वो हुए नहीं है, और अभी टाइम कम बचा है, तो वो बचे हुए 4 लेसन कैसे करने, मतलब आपको तुरंत ही आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कंपनीज एक्ट से. आज ही रात से, मतलब कल का वेट भी नहीं करना है, आज रात से ही स्टार्ट कर देना है कंपनीज एक्ट. और आपको डेली सुबह उठ के अराउंड 3 आवर्स 3 घंटा आपको लॉ को देना है. हमारा सीक्वेंस होगा, अभी जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ उतना करके छोड़ दो, साइड में रख दो उसको. ओके. स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट. आज रात से स्टार्ट करना है, ठीक है? और कल सुबह से रोज 3 घंटा अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हो वहां से 3 घंटा आप लॉ ही करेंगे, कुछ भी हो जाए. एंड स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपनीज एक्ट से. कंपनीज एक्ट के बाद हम लोग जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट पे, फिर हम जाएंगे एलएलपी एक्ट पे, और उसके बाद जो बचे यूनिट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वहां पे जाएंगे. इसका लॉजिक क्या है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे यूनिट्स करने लग गए और टाइम ज्यादा आपका चला गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है. हाँ. ठीक है ना? वो जितना सा हुआ उसको साइड में रख दो. ऑलमोस्ट 75% चैप्टर तो वैसे भी हो गया, 75-80%. हाँ, स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट जो 22-23 पेज का चैप्टर है सिर्फ. पार्टनरशिप करो अराउंड 30-35 पेजेस, एलएलपी 12 पेजेस. ये 3 चैप्टर करके आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मेरा 80% सिलेबस तो हो गया. एंड वो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करेगा टुवर्ड्स गिविंग द एग्जाम एंड क्रैकिंग इट. ठीक है? हाँ, और मतलब अगर लॉ एंड तक मतलब ऐसे ज्यादा हुआ नहीं और थोड़ा, तो फिर बीसीआर पे ज्यादा फोकस करके मार्क्स गेन करने का कर सकते कोई ट्राई. पीसीआर में आप अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, अच्छी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तो आप अराउंड 27-28 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो 27-28 मार्क्स. बहुत अच्छा गया तो मे बी 32-33-34 जाता है, बाकी 27-28 आता है अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो. हमें टारगेट करने हैं 50 मार्क्स. ठीक है? एवरेज 50 लाना है टोटल के लिए, तो हमें 50 मार्क्स टारगेट करने हैं. तो अभी भी मेरे पास अचीव करने के लिए सेफेस्ट साइड में भी 22 से 25 मार्क्स बचते हैं. एंड फॉर दैट ऑब्वियसली आई एम अगेन सेइंग, जितना का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है उसके बाद कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप और एलएलपी, ये 3 चैप्टर कर लो, अच्छे से कर लो. आप आराम से 22 मार्क्स स्कोर कर लोगे फॉर श्योर. 22-24 100% कर लो. ओके सर, थैंक यू.
Bhisma Jain, and Jitu sir, if you are able to hear us, listeners, please. Yes, sir. Okay, Jitu sir, are you there? Yes, sir. I'm there only. Okay. I was listening to all the professors, all the legendary professors. Okay. Vishwanath sir, good Okay. evening, sir. Mithali ma'am, good evening. Darshan sir, good evening. Good evening, sir. So अभी जीतू सर लाइन पे है तो बिस्मा जैन का क्वेश्चन लेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स. Rest all the subjects are over, right, sir? Yes, sir. Good evening, sir. So may I Okay. ask my So doubt? can I share my screen, sir? No, sir. Right now, Bismarck Jain, are you able to? Sorry. Okay, sir. You can start. You can continue now. Okay. Sir. Yes, And before that, we are really grateful to CA Darshan Oja sir, CA Mithali Khose ma'am, and CA Vishwanath Sharma sir for your wonderful deliberation. And आपने बहुत ही अच्छी तरीके से meticulously and patiently आपने सारी queries handle की and उसको solution दे दिए. And मुझे लगता है कि more than 900 students had registered watching over Zoom as well as on YouTube, and it was really tedious and tedious task for us to manage all the queries. We are really apologizing from our whole team from bottom of heart. अगर किसी की queries is not yet answered, you can email us. You can put in the comment section of in the YouTube channel, या फिर you can directly WhatsApp me. ये सारी queries we will be trying to answer in as soon as possible. All the faculties will be guiding you, and we will try to have one more session. Also, we are going to start the crash course for all these 4 subjects approximately from 29 this coming Sunday. So stay tuned for this also. We will provide the whole schedule through emails, WhatsApp, and through YouTube channel. That's it from my side. Thank you, Vishwanath Sharma sir. Thank you, Darshan sir. Thank you so much. Thank you so much. It was really great pleasure to have such a legendary faculty members guiding us. And thank you to Rishikesh sir also. Absolutely. For Absolutely. Yeah, for sure. For the student of ICAI who are struggling for the examinations and suffering from a lot of problems during this COVID sessions. They have started online lectures and all. So you have taken a good job, sir. So, and extremely sorry, Vishwanath sir, Darshan sir, and Mithali sir, I won't be able to attend your session because it was nice to attend your session anytime. But unfortunately, I was out somewhere, so I won't be able to. So now I have to take my session. So yes, please allow me, sir. Thank you, everyone. And now I request Jitu sir to take charge and guide all the students. They are waiting for you. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Yes, sir. Everybody is not able to speak. Shall I give them permission to mute? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay. Okay. For a minute or 10. Yes. 1 second. There is mute, unmute participants. Okay. I'll solve each and everyone's query later on, but just let me teach you some few examples. First, then we'll solve all your doubts. Good evening, sir. So I have one general doubt. I will solve later on. Let me solve this one first. Okay, sir. Is this readable to everyone? While computing, I'll solve one example of correlation regression, and then we'll start our session. While computing rank correlation coefficient between profit and investment for last 6 years, so here n is equal to 6 of a company, the difference in rank for a year was taken as 3 instead of what? 4. So D
wrong and D correct. She has taken, company has taken a difference of rank as 3 instead of what? 4. लेने का था क्या? 4. ले लिया क्या? 3. Okay. What is the rectified rank correlation coefficient? If it is known that the original value of rank correlation coefficient was what? 0.4. So R wrong is given 0.4. We know N, we know D, we know DC. DW means what? Wrong observation, wrong difference. Correct difference is 4. We want always, what we want is D square, right? In rank correlation formula, we want always D square. Formula of R is, R wrong is 1 minus 6 summation D square upon N cube minus N. This is what the formula of R wrong wala. R wrong is what? 0.4. 1 minus 6 times summation D square. Wrong we don't know. What is N? N is here, it is 6. So 6 cube minus 6. So it is 0.4. 1 minus 6 summation D square wrong. 216 minus 6 is 210. And when you cancel it, it will become 35. So summation D square wrong upon 35 will be what? 1 minus 0.4, that is 0.6 times 35. So summation D square will be what? Summation D square wrong will be 35 into 0.6, that is 221, that is 21. Now this is wrong summation D square. Summation D square correct ka formula is summation D square wrong minus D square wrong plus D square correct, right? So it will become what? 21 minus 9 plus 16. So it is what? 28 somewhere. So summation D square correct is what? 28. Now the formula of R correct is 1 minus 6 summation D square upon N cube minus N. So it will become what? 1 minus 6 summation D square is how much? It's 28. N cube, N is same only, it is 210. So it is 35. 7 4s are 7 5s are. It is 1 minus 0.8. Answer is 0.2. This is the way we are solving. Yes or no? Please answer me. This is the way we are solving the value of rectified correlation or regression. Hello? Yes, thank you. So we are using Spearman formula. This is the procedure for the solving this answer. But instead of doing all this stuff, we will solve this question in a very simpler manner. We will not doing all these things. ये हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. आप लोग को 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा using our shortcut, which we are teaching in our crash courses and everywhere. In our each and every session, we are using this crash course, and through crash course, we teach all this sums and all these formulas and everything. ये पूरा इतना बड़ा इतिहास सॉल्व नहीं करना, और in one line we'll write the answer. See, D wrong is 3, D correct is 4. What is the difference? Here it is 9, here it is 16. Difference actually is how much? 7. So you will multiply the 7 with 6, because in formula we have 6 summation D square. So we multiply the 7 with what? 6. Divide by N cube minus N, because what is N? It is 6. So it is, again you can say 210. That is 216 minus 6, 210. It is 35. Again it is what? 5. So it is 1 upon 5. Answer is 0.2. So you have to subtract this 0.2 from the given answer of the 0.4. So 0.4 minus 0.2, answer is 0.2. This is the final answer. Khatam. In a minute or in a second, you will get the answer. In second, you will get the answer. In second. Again, let me tell you again. Instead of 3, she has taken 3 instead of what? 4. The wrong one is D3 is DW is 3 and D correct is 4. So difference of square is how much? It is 7. We multiply this 7 with what? 6. Divide by what? N cube minus N, that is 210. Because in each and every formula we keep this N cube minus N. 6 upon 210 is 35. 7 upon 35 is 1 upon 5. It is 0.2.
So we have to subtract this 0.2 from this original 0.4. So we'll get 0.2. Why we have to subtract? Because we have taken this wrong wala element. We have taken this DW as 3 instead of what? 4. हम लोग को 4 लेना था, हम लोग ने क्या ले लिया? हम लोग ने 3. तो ये डिफरेंस जो हम लोग ने कम सब्ट्रैक्ट है उसको तो और ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. अगर ये उल्टा होता ना, if DW is 4 and DC is 3, then we have to add 0.2 in this. Are you getting? The answer will be 0.6. Got it? समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो you can write a comment in comment box so that sir will get it, understand कि भाई चल रहा है कुछ धमाल, बच्चे लोग को मजा आ रही है. So are you getting? समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes or no? Yes or no? Very good. Chalo. So this is the way we are teaching in crash course. So let me give my introduction. Myself, Jeetu sir. I'm teaching mathematics with ICAI for last many years, and we have taken many crash courses of ICAI. So today I'm here to share my experience to the students of ICAI who are all appearing for like June 22 examination. So I have shared my screen for my work, not for your work, my dear friends. So I'm requesting you all those who are doing this musties and all in this doing annotations and everything in this on my screen. So please remove all these things. Otherwise, I have to stop sharing my screen, and then I'll just keep on saying and we'll keep on talking and all. That's it. Then मतलब फिर वो आपको मजा नहीं आएगा सेशन के अंदर. फिर मेरा ऐसा वीडियो ऑडियो लेक्चर चल रहा है, ऐसा आप लोग देखते रहो और फिर आपको मजा आएगी. जो आपको देख समझेगा वो लिखना, अदरवाइज लिव इट. राइट? सो गिव मी अ स्पेस सो दैट आई कैन. हाँ, यस सर, एक मिनट. WRC विकासा की चेयरमैन है CA केतन सैया सर. He has joined. He would like to speak for 1 or 2 minutes. If you don't mind, shall I give the permission? अरे yes, that is sir. सवाल ही नहीं sir. 100% sure sir. Yeah. Ketan sir, am I audible? Yes. Yes. So I warmly welcome the dynamic chairman of WRC Vikasa, Ketan Saiya sir. Sir, please guide our students audience. So let me first congratulate the Satara branch, Rishikesh and Mansi and Deepak, all 3 branches for organizing such a wonderful program for the student about foundation course. My compliments, and they have been doing very good job, and hope they'll continue this helping all the students. And also thanks to the entire faculties who have spared their valuable time for guiding the student, those who are going to appear for this foundation exam. In fact, there is huge need of these type of program, because when we were appearing, we were not fortunate to have such program, and that's why this is, a wonderful initiative taken by the Satara branch. They have taken the lead and organized this program. Coming to the students, I personally feel that there is no option of hard work. You have to work very, very hard, like be it foundation, be it IPCC, be it final. We all need to do a lot of hard work. Of course, planning is essential. You need to plan your days, what you are going to do, how you are going to study in a day, whether to study 2 subjects or to study 3 subjects. I personally feel you should not be studying 1 subject and should not be studying 4 subjects, because that will be too much if you study 4 subjects, and if you study only 1 subject, you'll get tired. So either, you study 2 subjects or study maybe 3 subjects a day. In the afternoon, you all can, take up practical subject like maths, and in the morning you can take up theory subject. Practice of a paper is essential. Nowadays, a lot of MCQs papers are available across, net when we search. So try and do the practice of the paper solving before you go for the, exam. Also, institute will be conducting a mock test paper at many places on the 30th. If that is available, the facilities, I'll request Satara branch, if along with 2-3 branches nearby, if they can organize such mock test for the student, I think that will be of a great benefit to all the students. So once again, thanks for giving me this opportunity to talk without taking much of the time. I once again, thank the entire team of Satara, Pune,
all the branches who have joined this program and doing a wonderful program. Keep it up. All the best to all the students. Thank you so much. Thank you very much, Ketan sir. And yes, definitely we will be doing mock tests. Along with ICI, we will be also having extra mock tests also. And sir, एक बात अच्छी बोलनी कि हमारे अभी इस सेशन के लिए there were more than 900 plus students registered and they were watching, attending over Zoom as well as on YouTube. Thank you very much, Ketan sir, for giving me this opportunity. Great. Keep doing such good for joining with us. Great, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. And over to Jitu sir. Thank you, sir. Yes. Yes. So there are many questions I got. कि सर कौन सा टॉपिक करने का, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एंड ऑल लाइक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो यहाँ से डर निकाल दो कि हम लोग को मैथ्स नहीं आता. You all are math student. Earlier, before 11th and 12th, you already took maths for 10 years. तो आप लोग 10 साल मैथ्स पढ़ाई है. Then maybe in 11th 12th किसी ने ऑप्शनल छोड़ दिया होगा, किसी ने करा होगा XYZ जो भी कंडीशंस रहेंगे. बट नाउ अगेन यू आर मैथ्स स्टूडेंट. तो एक यहाँ से डर निकाल दो हम लोग को मैथ्स नहीं आता. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, डर निकालने से कुछ नहीं को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिकॉज मैथ Hello, I'm audible again. I'm audible. Yes. So first of all यहाँ से निकाल दो कि मुझे नहीं आता है, मैंने yes. So मुझे नहीं आता, मैं मैथ्स स्टूडेंट नहीं था, तो एक वो डर निकाल दो यहाँ से. अब हम लोग का है ना, in 2 hours you will get 100 questions. जो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो लोग जनरली एग्जाम के लास्ट दिनों तक प्रिपरेशन नहीं करते. उन लोग का बहुत पहले से प्रिपरेशन हो चुका होता है, राइट. तो हम लोग को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे के अंदर इन 120 मिनट्स. सो यू विल गेट 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चंस. एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशंस के अंदर हम लोग को पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, रीडिंग, देन थिंकिंग, देन सॉल्विंग, इधर तक नहीं होता, एंड देन मार्किंग. ये भी हमारा एक काम एक्स्ट्रा बढ़ गया. अर्लियर हम लोग स्कूल में x = 3 फाइंड कर दिया, खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो. बट यहाँ पे इसका मार्किंग भी करना. मार्किंग विल ऑल्सो टेक सम टाइम. ऐसा गोला बनाने को भी टाइम लगेगा. आपको ABC ढूंढ के आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 है, 100 के सामने आपको ये मार्किंग करना है, ऐसा सर्कल बनाना. इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम. तो 4-5-6 सेकंड में वहां पे चला जाएगा. 8-10-12 सेकंड अपना यहाँ पे चला जाएगा. थिंकिंग और सॉल्विंग के लिए हार्डली हम लोग को 45 मिनट सेकंड्स बचेंगे, जिसके अंदर सोच के सॉल्व भी करना है, राइट. तो हम लोग अगर ऐसा अज्यूम करते कि भाई 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो ऐसा 99.99% केसेस में नहीं होता है. It is next to impossible. If we will go in examination also, then it is next to impossible for us also to cover each and every 100 questions in span of 2 hours, right? तो अभी हम लोग को यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. So what is strategy? So हम लोग को एक लिमिटेड पोर्शन कमिट करना है, लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करके एग्जाम अटेम्प्ट करके हम लोग को पास होके आगे बढ़ना है. Because in future you will not get any benefit of mathematics. If you are strong enough in other mathematics as well, you will not find any benefits in inter or in final as well. तो इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई benefits नहीं है. You just have to clear examination, yes, but for clearing examination it is must. So अभी out of 100 marks में से हम लोग अगर ऐसे बात करें तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम नए होंगे. Yeah, they keep every year they keep 20 क्वेश्चंस जो एकदम नए होंगे, जो आपके किधर मॉड्यूल में भी नहीं होंगे, किधर भी आपने स्कैनर में भी नहीं दिए होंगे, किधर भी नहीं होंगे. There will be more than 20-25 questions of such that कि जो आपने किधर भी देखे नहीं होंगे. उसके बाद 80 क्वेश्चंस बचे. 80 क्वेश्चंस में से
हम लोग ऐसा बात करते हैं कि हम लोग और 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हम लोग को लेंथी रहेंगे हमारे लिए, कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, अदरवाइज आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. प्लीज डोंट डू annotations and anything on my screen. Please don't disturb us. Requesting you all. 20 क्वेश्चन एकदम नए रहेंगे, जिधर आप जो आपको मॉड्यूल में भी नहीं दिखेंगे. हाँ, उसके कॉन्सेप्ट बेसिस सब मॉड्यूल का ही रहेगा, सब स्टडी मॉड्यूल का सिलेबस का ही रहेगा, बट एकदम नया रहेंगे. There will be 80 questions, 8 out of 80, there will be 20 questions such type जो लेंथी रहेंगे, जो आप लोगों ने अभी रैंक कोरिलेशन का सम्स पढ़ा, कोरिलेशन रिग्रेशन का पढ़ा, बराबर, प्रोबेबिलिटीज का कोई लेंथी सम्स पढ़ा, जिसमें अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सम्स है, डेरिवेटिव्स का कोई लेंथी सम आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन लेंथी सम्स रहेंगे 20 क्वेश्चन, बराबर. But at the same time, there will be 20 to 25 questions which is theory based, जहां पे आपको सोचने का ही नहीं है, जहां पे आपको सोचने का ही नहीं है, मतलब आपको टिक करके आंसर टिक करके आगे बढ़ना है. ऑप्शन 4 दिए होंगे आपको, अगर आपने थियरी अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छी तरह से टिक करके क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं. तो ये जो टाइम कंपेंसेट करना है, वो यहाँ पे उसका टाइम एडजस्टमेंट करना है लेंथी क्वेश्चंस के ऊपर. जो क्वेश्चन लेंथी होंगे बट इजी होंगे, जहां पे 72 सेकंड शायद 144 सेकंड्स भी लग सकते हैं, बट ये 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हेल्प कहां से करेगा, ये 25 क्वेश्चंस में से. ये थियरी बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग को इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि थियरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर याद तो दो चीज होती है, या तो हम लोग को एक स्ट्रोक में याद आ जाता है या तो नहीं आता. सर थियरी कहां से आएगा, तो थियरी के लिए एमओसीटी है, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, एमओडी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है. मतलब सब स्टैट्स का हर एक टॉपिक से थियरी आ सकता है, यस, हर एक टॉपिक से थियरी आ सकता है. सर कहां से आएगा, मॉड्यूल में से ही आएगा. मॉड्यूल के पीछे जो आपको, मॉड्यूल के पीछे आप लोग को जो दिए हुए एमसीक्यू, भले 400 एमसीक्यूज है, एक बार घसीट डालो, पढ़ डालो एक बार. आपके नजरों के सामने जितने एमसीक्यू आप गो थ्रू करेंगे ना, इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू ओनली. कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर जितने एमसीक्यू हमारी आंखों के सामने जाता है, अपने अगर आपको कोई फ्रेंड बेन आपका अगर मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम देता रहेगा, नीट जेईई की एग्जाम, तो वो लोग हजार एमसीक्यू एक एक चैप्टर्स के कर रहे हैं. कोचिंग क्लास वाले 1000 एमसीक्यू कराते हैं. क्या 1000 में से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा 100%. तो आप इतने क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर दो कि उसमें से एग्जामिनेशन में आ जाए, आप सीधा टिक कर दो आंसर. Are you getting? तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल की ये थियरी इसमें से स्ट्रॉन्ग करके जाओ. अच्छा, थियरी का भी पढ़ना, प्रैक्टिकल कौन से टॉपिक का पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल के लिए हमारा एमओसीटी इजी है, एमओडी इजी है, और कोरिलेशन रिग्रेशन, ये तीन टॉपिक बहुत ही इजी है. इसका प्रैक्टिकल सम्स भी हम लोग को करके आना चाहिए. आपका जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है, उसको प्रोबेबिलिटी भी कर लेना चाहिए. बाकी इसका थियरी पढ़ लिया तो बस है हमारे लिए, उसके लिए आगे कुछ जाने का जरूरत नहीं है, बराबर. नेक्स्ट हम लोग को एलआर जो हम लोग का 20 मार्क का है, लॉजिकल रीजनिंग, वो हम लोग को रेडीमेड मिलने वाला है. क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ सेज इट इज लॉजिकल, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है. आप लोग को सॉल्व करने का, हर एक क्वेश्चन लेके चालू करने का. एलआर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को इसके ऊपर मिलेंगे, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे. ब्लड रिलेशनशिप डालो, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशनशिप, बराबर. फिर अपना डायरेक्शन सेंस डालो, आपको डायरेक्शन सेंस मिल जाएंगे. सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जब ऑनलाइन में सर्च मारो तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी ऑनलाइन में आपको मिलेंगे, जिसके अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट का होगा. तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने का, बेसिक क्वेश्चन आपको रहेगा. क्योंकि लॉजिकली आप साउंड हो जाओगे ना तो एग्जाम में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाते नहीं बोलता हूँ, कि जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते, चाहे 1000 क्वेश्चन पढ़ाओ या 5000 क्वेश्चन पढ़ाओ, ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, बट एट द सेम टाइम जो लॉजिक पढ़ा उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. तो एलआर के अंदर जो 20 मार्क है, वो
आपका मस्के के हिसाब आपको मिल जाना चाहिए, बराबर। तो 20 मार्क्स का टाइम यहाँ से कर लेंगे, 20-25 थियरी का यहाँ से करेंगे, 20 क्वेश्चन लेंथी रहेंगे, उसका एडजस्टमेंट यहाँ से करेंगे, और 20 मोर क्वेश्चन जो नए होंगे टोटली, जिसका कोई मतलब कोई मॉड्यूल में कोई सम्स उसके ऊपर नहीं रहेगा, और 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डिटो टू डिटो मॉड्यूल के ही रहेंगे, जो डिटो टू डिटो मॉड्यूल के ही रहेंगे, जिसका मतलब आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से आते रहेंगे तो आप सीधे जाके एग्जामिनेशन में टिक करके आओगे। सपोज मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन आज सॉल्व करा है, ये क्वेश्चन अपना ये रेक्टिफाई, ये अपना मॉड्यूल के अंदर भी किधर किधर है ये क्वेश्चन, बराबर। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया कि 0.2 आ रहा है, आज मैंने कंफर्म करा दिया। तो अगर सपोज यही क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ 3 और 4 और 6 इयर्स और 0.4 आ गया, यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया, तो आई नो दैट यू विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू विल डायरेक्टली टिक 0.4 0.2 किधर जो ऑप्शन है, आज भाई टिक करता हूं 0. हमारा आंसर है, खत्म। तो ऐसे आपको 20 से 25 क्वेश्चन रेडीमेड मॉड्यूल के डिटो टू डिटो क्वेश्चन 100% आने वाला एग्जाम में, एंड दिस द वे योर पेपर विल कवर, बराबर। अब अपना एनोटेशन प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, आई विल स्टॉप माय शेयरिंग माय स्क्रीन, जो भी कर रहा है। इसके साथ हम लोग को नेक्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर मैं थोड़ा आता हूं। मैंने बोला कि स्टैट्स के अंदर आप लोग इंडेक्स नंबर और उसके थियरी पढ़ सकते हैं, थियरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स, अगर जिसको डिफिकल्ट लगता है। इंट्रोडक्शन टू स्टडीज अपना थियरी के सम्स, अपना थियरी पढ़ लेने का, थियरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का थियरी पढ़ लेने का, इंडेक्स नंबर का थियरी पढ़ लेने का। बाकी ये 4 चैप्टर हमको करना चाहिए सॉल्विंग के लिए। तो जिसका डाउट था कि सर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं स्टैट्स में, ये क्लियर किया। आगे मैथ्स की बात करूंगा आप लोग से मैं। देन मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग का रेशियो है, देन इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है, देन एलपीपी इनइक्वालिटीज, देन एसआई सीआई। लास्ट 2 पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। देन वी हैव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दिस माय फेवरेट। 3 साल पहले इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे, लास्ट 2 साल से 8-8 10-10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से आए थे। तो एवरी ईयर इट वेरीज, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसा हम लोग कोई बोल नहीं सकते, बट कोई भी टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, इट हैपेंस। देन वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज, देन सेट रिलेशन फंक्शंस, एंड देन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। These are the 8 topics we have in mathematics. तो इसमें से आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड अच्छी तरह से करना चाहिए, मेरे हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन करना चाहिए, इक्वेशंस और एलपीवी, ये टॉपिक्स तो आपको अच्छी तरह से करने ही चाहिए। अगर इसमें आपको रेशियोज, क्योंकि रेशियोज के अंदर है ना, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो मॉड्यूल के, वो बहुत ही डिग्रेडेड लेवल के क्वेश्चन है रेशियो के अंदर, वो लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते, एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल के आते हैं। तो आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन अगर मॉड्यूल के सम्स कर लिया और किसी एक्स्ट्रा स्कैनर बिनर से प्रैक्टिस करो। अगर सपोज नहीं आया तो आप लोग को साथ में सेट रिलेशन फंक्शन करना चाहिए, ये अच्छा चैप्टर है, बराबर। ये 5 चैप्टर आप कर लोगे, 5 चैप्टर आपका टोटल 40 मार्क्स। वेटेज का लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सर वेटेज क्या है, वेटेज के चैप्टर का। तो मुझे मालूम है कि मैथ्स का 40 मार्क का है, एलआर का 20 मार्क का है, स्टैट्स का 40 मार्क का है। अब मैथ्स के अंदर 8 चैप्टर है, इसके अंदर 4 चैप्टर है, इसके अंदर 6 चैप्टर है, बराबर। तो अभी डिवाइड आप लोग ही कर लो, किसी कोई प्रोफेसर को पूछने का जरूरत नहीं है। 8 5 40, 8 5 6 6 30, 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से 6 से 7 मार्क का आएगा हर एक चैप्टर में, यहाँ पे हर एक चैप्टर 5 मार्क का आएगा, हर एक चैप्टर में 5 मार्क का आएगा। ये 5 मतलब 5 मार्क का एवरेज हर एक चैप्टर में से आने वाले, बिकॉज देयर आर 16 टॉपिक्स ऑल टुगेदर यू हैव इन लाइक मैथमेटिक्स स्टैट्स। तो और 100 मार्क का पेपर है, तो 100 डिवाइड बाय अगर 16, तो 16 6 96, तो 6 मार्क का अप्रोक्सीमेट। मैं वही बोल रहा हूँ, 5 से 6 मार्क का पेपर हर एक में से आने वाला है, हर एक में से 5 से 6 मार्क का जब हम लोग को सम हर एक में से आएगा, तो हर एक को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं कि भाई कितने मार्क का किस में से आएगा, क्या करूं क्या नहीं। आपको ऐसा लगता है कोई 1-2 चैप्टर आपको छोड़ दें, बिंदास छोड़ दें, 1-2 चैप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको डेरिवेटिव, अभी किसी ने पूछा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ दो, बिंदास छोड़ दो अगर आपको नहीं जमता है तो, क्योंकि एंड टाइम पे अभी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टॉपिक हम लोग नहीं कर सकते। क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा, क्रैश कोर्स में शॉर्टकट अपना लिया, तो क्रैश कोर्स में शॉर्टकट्स के अंदर अगर आपको मैंने बताया, आपको उसमें कोई क्लिक हो गया तो अच्छी बात है, बराबर। बट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन शॉर्ट एंड टाइम पे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बराबर। क्रैश कोर्स में आपने पढ़ा, शॉर्टकट आपको
हेलो हेलो यस हाँ, तो मैं आप लोग को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एंड टाइम पे आप लोग एंड टाइम पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टॉपिक नहीं हो सकता। बाकी आप लोग ये 6 टॉपिक करेंगे, स्टैट एलआर पूरा और स्टैट्स के पूरे। तो और आप लोग को एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 100 मार्क का जो पेपर है उसमें से आप लोग को कितने मार्क्स लाने मालूम है? 100 में से आप लोग को सिर्फ 40 मार्क ही लाने पास होने के लिए, ओनली 40 मार्क्स। सर फिर भी नहीं आते, वी नो दैट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे मार्क्स चले आते लोग। दूसरा, लोग टेंशन में बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो 100 क्वेश्चन में सिर्फ 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आता है। 40 क्वेश्चन कितना भी एक्यूरेट आप सॉल्व करो, 100% आप फेल हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन फेल हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व फेल हो जाएंगे। एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व 60 to 70 क्वेश्चन एक्यूरेटली। इतना आपको करना ही पड़ेगा टू क्लियर एग्जामिनेशन। 60 to 70 क्वेश्चन आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको आपको लगे कि ये आंसर तभी टिक करो आप, ऐसे तुक्का मार के नहीं। और दूसरा ऑप्शन, अगर जिसको एग्जामिनेशन के लास्ट 5 मिनट के पहले, पेपर खत्म होने के पहले 10 मिनट पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व घड़ी का टाइम नहीं देखा हम लोग ने और सॉल्व कर दिया, और लास्ट में से हम लोग ने सिर्फ 40 क्वेश्चन 35-40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उतना करके आने का नहीं, लास्ट 10 मिनट के अंदर जो 60 क्वेश्चन बचे उसको बिंदास तुक्का मार के आ जाओ, ऐसे भी फेल है, देन व्हाट विल गेन? रिजल्ट फेल ही आएगा। तो इट इज मच बेटर कि टू डू समथिंग, राइट। तो लास्ट के 10 मिनट के अंदर अगर 10 मिनट तक अगर आपके सिर्फ 30, 35, 40 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो कितना भी एक्यूरेट हो आप 100% पास नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस, कम से कम इतना करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल क्लियर एग्जाम, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू क्लियर। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप लोग को ये जो मैंने बताया, ये टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कोई आईसीएआई ने किधर दिया नहीं है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उन लोग ने लास्ट 2 अटेम्प्ट से चालू किया है 20, 40, 20, बट इसमें भी वो लोग ने सिर्फ रैंडमली बोला है, अगर ये 20 का शायद 15 मार्क का पूछेंगे या 40 का 60 मार्क का पूछेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते आईसीएआई के सामने। और दूसरा, ये 40 के अंदर वो लोग ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। पीएनसी के आपने 10 क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। कोई टॉपिक से आप बढ़ के गए, एलपीपी इक्वेशन जोरदार पढ़ के गए, बट एक भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। एलपीपी के अंदर आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, जो हम लोग को 12th के अंदर था ऐसा कुछ सॉल्विंग का, 3x - 5 ≤ 8 एंड 4x - 7 ≤ 9, इन दोनों का रेंज फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चंस है स्कैनर के अंदर, वैसे क्वेश्चंस करके जाना। मॉड्यूल के अंदर बहुत लिमिटेड पोर्शन दिया हुआ है, मॉड्यूल के अनसॉल्व पार्ट, सॉल्व पार्ट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी देख लेना, सॉल्व करके ही जाने का हर एक क्वेश्चन, अदरवाइज तकलीफ हो जाएगी। मॉड्यूल के सॉल्व अनसॉल्व दोनों सॉल्व करेंगे तब जाके आप पास होने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। Yes. So now you can raise your hand and you can solve your queries with me if you have any queries. ये जो मुझे बताना था वो मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया कि ये मेरे को ऐसा लगा कि ये आप लोग से डिस्कस करना चाहिए, दिस इज कॉमन पॉइंट्स। हाँ, एक मैं आप लोग से बराबर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी आना सॉल्व, आपको ना कंपैरिजन पॉइंट समझना पड़ेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कोई भी चैप्टर टाइम वैल्यू के अंदर ज्यादा तकलीफ होता है उसके अंदर। अब सपोज मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे का आज का एज है सपोज 5 years अप्रोक्सीमेट। किसी ने पूछा कि भाई आपके बेटे का एज कितना है, तो मैं बोलूंगा 4.5-5 साल है। हेलो, सॉरी। सो कोई अगर मुझे पूछा था आपके बेटे का एज कितना है, तो 4.5-5 साल है, बराबर। 6 months के अप्रोक्स में आंसर दे सकता। आज मेरा एज 37 years है, तो अगर ऋषिकेश सर ने किधर लिखा है कि जीतू सर एज 35-37 years,
2 साल का डिफरेंस, 2 साल के मार्जिन में ही कैन टॉक। 35-40 साल होगा, ही कैन टॉक। जीतू सर का एज कितना होगा? 35-40 साल होगा कुछ, ओके एक्सेप्टेबल। 4 साल के मार्जिन में भी चलेगा, यहाँ पे 6 महीने के मार्जिन में भी चलेगा। अब मेरा और एक बेटा है, ऐसे एक ही बेटा है, टाइम पास कर रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक बेटा, उसका एज सपोज 15 दिन हुआ है, 15 डेज। यहाँ पे अगर किसी ने मेरे को मेरे बेटे की एज पूछी तो मैं बोलूंगा यार 3-4 महीना हुआ रहेगा, नहीं आई वोंट। यहाँ पे 3-4 महीना अगर मैंने बोला तो डिफरेंस कितना है? 3 महीने का ही है। 3 महीने के अब यहाँ पे 6 महीने के मार्जिन में चला सकता हूँ, यहाँ पे 4 साल के मार्जिन में चला सकता हूँ, यहाँ पे 3 महीने के मार्जिन में नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन पॉइंट हम लोग का डेज के अंदर बहुत मिनिमम है। तो डेज के अंदर ऐसा बोल सकते 15-18 दिन है, मेरे बेटे का 15-17 दिन हुआ, बोल सकता 2 डेज के मार्जिन में बोल सकता है, कैन टॉक। हियर द एज इज 5 years, तो यहाँ पे एवरेज 6 महीने में मार्जिन में बोल सकता हूँ। यहाँ पे एज 37 years, एवरेज 4 साल के मार्जिन में आई कैन टॉक। तो हम लोग को डिफरेंस अभी यहाँ पे 15 दिन का मेरा बेटा और मैं बोल सकता हूँ 4-5 साल कैसे बोल सकता हूँ, 4 महीने के डिफरेंस में, 4 साल के डिफरेंस में आई कैन नॉट टॉक। यहाँ पे 4-15 दिन है लेकिन 4 साल का एज है मेरे बेटे का, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस रेशियो कंपैरिजन पॉइंट हम लोग को चेक करना होता है। तो हम लोग जब रेशियो अपना इसके अंदर बात करते रहेंगे पैसे की, तो करोड़ रुपए की जब बात करते रहेंगे तो 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया एक्सेप्टेबल है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग जस्ट अबाउट 100 रुपीज, तो वहां पे 115 रुपए चलेगा नहीं। लाख करोड़ के सामने 1 लाख भी और 10,000 रुपया भी चलेगा, बट 100 के सामने 115 चलेगा नहीं, बिकॉज द मार्जिन इज वेरी लेस। बिकॉज इन एग्जामिनेशन आपको हेडिंग में मॉड्यूल में भी लिखा होगा, वी हैव टू टेक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स। हम लोग को मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो मोस्ट नियरेस्ट आंसर है वो हम लोग को टिक करने का है, राइट। सो ऐसा हम लोग का प्रॉब्लम होता है, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग जरा जब ध्यान देंगे तो आराम से टिक करने का, घाई नहीं करने का, अदरवाइज यू विल फील आगे 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 आगे, बट एट द एंड इट इज व्हाट गया एंड यू विल लूज योर मार्क्स। सो ऐसा नहीं करना है बच्चा लोग। यस, न्यू एनीवन एल्स? Who raised the hand? इधर से मालूम पड़ेगा यार, पार्टिसिपेंट। अच्छा, लास्ट 1 मिनट। हाँ पूर्वा, आस्था, संजय, अर्चन, मोहम्मद निहाल, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट योर माइक प्लीज। ऋषिकेश सर। हेलो सर। हाँ हेलो, प्लीज टेल मी। या प्लीज टेल मी। हाँ सर। सर माइकल, ये सर हाँ मिले सर, बच्चों क्या बोल रहे मेरे से? नहीं सर, डन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके ओके ठीक है। हेलो हेलो सर। यस, हाँ बेटा बोल बोल बोल। Sir, myself Varshan Mishra. Actually, sir, I am from non-math background. So, how to start mathematics from which chapter? And presently, I am in 12th. I will appear for CA Foundation in May 2023. In May 23. Yes, presently I am in 12th. So you have lot of time to practice. You have a lot of time to practice. आप कोई भी कोचिंग क्लास या अपना कभी भी ज्वाइन करो किधर भी इंस्टीट्यूट से क्या, और जैसे ही टॉपिक अपना चलता है पहले स्टैटिस्टिक्स चालू करो, देन एलआर, देन गो थ्रू विद एलआर एंड देन यू कैन गो थ्रू विद मैथमेटिक्स। मतलब सर मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर पहले से स्टार्ट करना है, या मतलब सीक्वेंस कैसे मेंटेन करना है? सीक्वेंस के अंदर अभी आप कोचिंग क्लास इधर ज्वाइन करोगे ना, कहाँ पे रहते हो सर आप? मैं तो वेस्ट बंगाल पे रहता हूँ।
वेस्ट बंगाल ने दीदी ने वहां पे कोई कोचिंग क्लास नहीं लगवाया सीए के लिए कोई? नहीं, मैं तो छोटे इलाके में रहता हूँ ना, इधर कलकत्ते वगैरह में है, लेकिन मैं तो एक छोटा इलाके में रहता हूँ, तो उधर तो इतना कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह अवेलेबल नहीं है। बराबर। तो अभी है ना ऋषिकेश सर अभी ऑनलाइन के लिए मैसेज डालेंगे अभी, तो अपना क्रैश कोर्स होगा ना, तो क्रैश कोर्स के अंदर मैक्सिमम टॉपिक हम लोग कवर करते हैं और वो सीक्वेंस भी फॉलो करते हैं हम लोग, और वही सीक्वेंस में पढ़ाते भी हैं। तो स्टैट्स के अंदर अपना स्टैट्स के अंदर तो एमओसीटी है, मेजर सैडल टेंडेंसी डिस्पर्शन, वो ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा। कोरिलेशन रिग्रेशन वो होने के बाद स्विच ओवर टू एलआर, देन स्विच ओवर टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम है। देन यू कैन गो टू लाइक इक्वेशंस, देन एलपीवी। जो सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो किया हुआ है उसको करो, एंड धीरे धीरे अपना सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, उसके अनसॉल्व सॉल्व करने का। और कोई डाउट्स रहेगा तो ऋषिकेश सर अवेलेबल है, हम लोग भी अवेलेबल है एनी टाइम। अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले ओके तो सर। बहुत सारा बेनिफिट हो जाए। तो क्रैश कोर्स के अंदर बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, अभी भी ज्वाइन कर ले। और अगली बार जब होगा वापस तेरे बैच के टाइम, मई 23 के टाइम, तभी तभी बैच लेना। दो तीन बार बैठ जाएगा, तेरा सब क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, ये क्रैश कोर्स सर कैसे ज्वाइन करना है? वो सब बताएंगे आपको, मेल आएगा सर। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन। हेलो, हाँ यस, बाद में मुझे सुना होगा ना, कहीं फोन आ गया। आस्था, संजय, अर्चन हो, प्लीज प्लीज। आस्था, और किसको डाउट है भाई? रेज हैंड तो किया हुआ है लेकिन अभी कोई बोल नहीं रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो 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 जल्दी। इंट्रोडक्शन बाद में, इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं हमारे पास। हरिओम। सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो क्यूए का पेपर है वो सर एमसीक्यू होता है, तो उसमें रफ वर्क की हमको बहुत जरूरत होती है, तो वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। मिलेगा बाद में सर हमको क्वेश्चन पेपर में करके थोड़े क्वेश्चंस में तो रफ करना पड़ता है, और सर उसमें टाइम भी 2 आवर्स होता है, तो हमको बहुत कम टाइम मिलता है। उसका बेटा कुछ नहीं कर सकता मैं यार, वो लोग सर जो प्रोवाइड करे उसमें करना पड़ेगा। सर तो एक सजेशन है, आप आगे सेंड कर सकते हो सजेशन सब Yes, स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैं I'll सेकंड अटेम्प्ट raise your voice for the same, and I'll talk to the leading our Rishikesh sir. Please note this point, and we'll talk with this our like big bulls, so that we can talk with them and we can tell them कि भाई जो इसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं आगे, ऐसा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Anyone else? अपूर्वा, हेलो तन्वी, yes yes yes, tell me. मैथ्स पे जब सम सॉल्व करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, उसमें फिर उसके लिए मेरा प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि हम लोग है ना थोड़े आलसी हो गए। हम लोग है ना एक्चुअली स्कूल के 10th के एफर्ट्स हम लोग सोच रहे ना, चलो 10th में क्या करते थे, तो 10th में हम लोग जोरदार मेहनत करते थे, एक एक चैप्टर हम लोग 2-2 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करते थे। अगर ऐसा हम लोग ने अगर चालू कर दिया तो 100% श्योर रहेंगे कि आपका एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आएगा आएगा और आएगा ही, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस यस बच्चा बोलो। बेटा आप बेटा आउट ऑफ कंट्री से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जोर से। सर हम जो कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर से करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ट्रिक्स अप्लाई करके, तो फिर इसको फास्ट स्पीड कैसे करें? बेटा फास्ट स्पीड करने तो देखो आपको कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर। वो कैलकुलेशन आपका ही स्ट्रांग करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट, मैं आपको कितना ही मोटिवेट करूं, नहीं आप कर लोगे, लेकिन वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस इज द ओनली की। और पूरे मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस इज द ओनली की। राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड आप देखो तो 8, 9, 10 जब हम लोगों ने इतना मेहनत किया था ना, आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग को क्वेश्चन देख के हम लोग को आंसर मालूम पड़ जाता था कि इसका आंसर ये है। देन व्हाई कांट इन सीए फाउंडेशन, इसमें भी करो, इसमें भी आपको 100% आएगा। ओके सर। और एक उसका आंसर यही है, प्रैक्टिस, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ओनली। या ध्यान भी, देन
वो वाला Yes, sir. Good evening, sir. हाँ बाद में चलो जल्दी आगे बढ़ो। सर मेरा डाउट ये है कि हमको सारा मटेरियल और वो सब हमारे पास बहुत रहता है, तो एग्जाम के 1.5 डे पे कहाँ से क्या करे वही पता नहीं चलता। अच्छा क्वेश्चन बना मेरा, सुनो जानवी, बिफोर एग्जामिनेशन आप लोग जब 1.5 महीना पढ़ोगे, अभी आपका शायद 1.5 महीना बाकी है, आपका 1 और 5 डेज आपको बाकी 35 डेज, तो 35 डेज का हमारा स्ट्रेटेजी हम लोग जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चैप्टर एक बार तो प्रैक्टिस हो गई। तो वाइल प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी सम, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे जस्ट प्रिपेयर अ नोट्स, वो एक नोट्स हम लोग प्रिपेयर करो, वो एक क्वेश्चन लिखो, उसके सामने हमारा एक उसका एग्जाम्पल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, उसका हमने सब शॉर्टकट, आपने अभी आपको ये शॉर्टकट पढ़ा तो एक शॉर्टकट कैसे सॉल्व हुआ, तो उसका एक क्वेश्चन और उसका शॉर्टकट का ट्रिक्स, तो ट्रिक्स और एक ऐसे एक नोटबुक मेंटेन करो शॉर्टकट कीज का, आपको जो जैसे पढ़ा हुआ वैसा उसका, और एग्जाम के एक दिन पहले जो आपको छुट्टी मिलता है तो सिर्फ वो एक बुक गो थ्रू करो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिसके अंदर फॉर्मूला सब कुछ आ जाना चाहिए। तो यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टडी मटेरियल for 1 day for a last day revision known as LDR. LDR. L means last day revision. LDR. You have to prepare your own notes. और आप खुद अपनी नोट्स बनाएंगे तो ही बेनिफिट होगा, मैं बना के दूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो रिकॉल ही नहीं होगा आपको। हाँ सर, वो हो गया, वो मेरे पास सारा फॉर्मूलाज और वो सब रेडी है, मैंने लिखा हुआ है, मेरा ही नोट्स बना है, पर मेरा अभी जो एमटीपी मैं दिया ना, मैंने आईसीआई में दिया एमटीपी, तो उसमें वही हुआ, मैं मतलब पैनिक हो गई कि करना क्या है, मेरे पास इतना सारा मटेरियल था और जो वो नोट्स किया ना, तो उसमें से फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये तो आता ही नहीं है। हाँ ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसके लिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ अर्चन मिश्रा, then संजय सुब्रमण्यम, then who else? मोहम्मद निहाल। Hello sir. Yeah, tell me. Sir, please also explain sir law sir in bird eye view. CAT. Hello. Yes. Yes sir. Yes. Sir, please also explain sir law in bird eye view sir. What law? Yes sir, law. I won't be able to guide you about law. I'm a mathematician, my dear friend. Okay sir. Okay. Archan Mishra. Yes. हेलो। हाँ yes बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर जो हमारा मॉड्यूल है मैथ का, उसमें तो बहुत इजी सम्स रहते हैं और जो एग्जाम्स में आते हैं वो इतने डिफिकल्ट रहते हैं, तो समझ में नहीं आता मतलब कहाँ से रहते हैं, और मॉड्यूल के एमटीपी भी सॉल्व हो जाते हैं पर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? मैंने बेटा आज ही बोला कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मॉड्यूल के डिटो क्वेश्चन रहेंगे, और 20 से 25 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे रहेंगे जो एकदम हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये हर एक आईसीआई के एग्जामिनेशन का ये अपना रूल है। तो 20 से 25 जो एकदम डिफिकल्ट रहेंगे ना, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप लोग को है ना, जो क्वेश्चन नहीं आता, सपोज जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ देने का, आगे बढ़ने का। कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आपका मैटर क्लोज हो जाएगा, वहां पे आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रखो उसके अंदर से। मॉड्यूल के एग्जाम आपने जो बताया क्वेश्चन की, मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत ही डिग्रेडेड है, एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते, कहाँ से आते समझ में नहीं आता, तो ऐसा होगा। मॉड्यूल इज ओनली अ बेस कि आपको ये सिलेबस में ये लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बट उसका लेवल वो लोग मेंटेन कर सकते हैं, उन लोग लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, दे हैव राइट्स। तो वो लोग कोई भी क्वेश्चन लेवल का, परमिटेशन का कोई भी क्वेश्चन कोई भी किधर से ही पूछ सकते हो वो लोग। तो वो अपग्रेड करने के लिए आपको स्कैनर होता है, सर लास्ट सेशन, तो अपग्रेड करने के लिए हम लोग कभी भी कोई भी कंटिन्यू थोड़ा धीरे से करो, तो कंटिन्यू करने के लिए हम लोग स्कैनर से गो थ्रू करेंगे, स्कैनर से सम सॉल्व करेंगे, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे हमारा ये ब्रेन डेवलपमेंट होगा। बट ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि उसमें से ही क्वेश्चन आएगा या मॉडल से ही क्वेश्चन आएगा। बट यस ऑफ कोर्स 20 से 25 क्वेश्चन मॉडल से आएंगे ही। बट हम लोग को डर कहाँ लग जाता है ना, जब वो क्वेश्चन, जब बाहर वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो हम लोग ऐसा करें ये तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए, और फिर ब्लैंक हो जाता है।
फिर एग्जाम ब्लैंक हो गए, फिर क्या होता है, हम लोग एग्जाम ब्लैंक होने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते तब लगता है अरे ये तो सब मॉडल में था, बट हम लोग को स्ट्राइक होता नहीं। वो 2 आवर्स का गेम इंपॉर्टेंट है, 2 आवर्स के अंदर प्रेशर नहीं लेना है, कूल आराम से पढ़ाई करो, आराम से करो, 100% हो जाएगा। बट वो कहाँ से आता है ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, और वो एग्जैक्टली कहाँ पे कैसे टाइप का कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो देखने के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन सर्च मारो। पर अगर मॉड्यूल के सम सॉल्व हो गए आपके अच्छी तरह से, थियरी आपका अच्छी तरह से हो गया स्टैट्स वैट्स का, तो आप लोग ऑनलाइन सर्च मारो, आपको परम्यूटेशन के जितने सम्स चाहिए उतने मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के जितने सम्स चाहिए उतने सम्स मिल जाएंगे। एमबीए के एंट्रेंस के प्रोबेबिलिटी के सम्स निकालो, एमबीए के एंट्रेंस के परम्यूटेशन के सम्स निकालो, हर एक लेवल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेवल पे आपको ये क्वेश्चन है और है ही। फिर आर.एस. अग्रवाल का एक ऑथर का बुक है आर.एस. अग्रवाल करके, जो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर काम करता है, उसके बुक्स है। जैसे बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जहां से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, अपने सम सॉल्व करवा सकते हो, जो आपको लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे जहां से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट Sir, I have another query. Yeah, please tell me. Okay. Sir, actually you have prepared scanner. So sir, I want to know from where I will get the scanner. From where you will get the scanner? Hrishikesh sir, can you please provide the where do you stay, my dear friend? In West Bengal. West Bengal. तो वहां पे भेजता हूँ मैं स्कैनर अपना। सर अपना स्कैनर वाले का नंबर है कोई, अपना सुचिता प्रकाशन वाले का? ऋषिकेश सर, wait, I'm having the number of scanner wala person. I'm sharing you in this Zoom chat room only. Wait, so you can just talk with him if he can guide you. He is a dealer of this Mumbai West Zone. Suchita. Okay, sir. Wait, because I forgot. The Prakashan. His name is Pushpendra. 7080835553. Pushpendra. Huh? I've sent the in chat room. Yes, next. CACT देवी पढ़ते हैं. Must. Next. Hello, sir. Yeah, dear. Sir, how many working sheets do we get for maths? No working sheets. So in the paper only we have to solve? Yeah. Okay, sir. And sir, while revision, what should be the sequence should be followed for maths at least? In whichever sequence you are comfortable, you just follow that only. But Because each and every student has some different strong base areas, right? If I'm strong in derivatives, I'll start with derivatives. If you are strong in permutations, start with permutations. In whichever you are strong, you just start with that topic. Okay, sir. But highest weightage is given to time value of money, right? We cannot say anything about examination marking system. Sorry. Okay. Yes, next. Naman. Archan. Done, sir. Okay. Sanjay, Subramaniam. Vanshika, I think. हेलो सर। Yeah, tell me please. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगर स्कैनर ना करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लें 10 इयर्स 7-8 इयर्स। बेटा कोई भी क्वेश्चन पेपर आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर आपको मैथ्स का नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू गो थ्रू स्कैनर ओनली, बिकॉज़ स्कैनर इज दैट ओनली. Scanner is memory based question paper they have selected in their exam syllabus. Okay sir. Okay, thank you sir. Welcome beta. Anyone else? और कोई? I think not, right? Any more queries, guys? सर मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, मेरी भी नहीं सर. We both will leave. मतलब
अभी सेशन अभी चालू है, कंटिन्यू है या बंद हुआ है कैसा? नहीं सर, सेशन चालू है सर, अभी हम लोग लीव कर सकते हैं, हो गया. I think all the doubts are clear. So at the end, wishing you all the best to each and every student of ICAI, Satara, and all over India. So Rishikesh sir will send you a link for the crash course. How many months of vacation available in CA Foundation? There is no vacation for CA student, my dear friend. If you really want to go for like CA, then please don't think about like a vacation. So I'm requesting you all, please do hard work. Wishing you all the best. May God bless you all. Rishikesh will send you a link for the crash course joining and all. Whether it is paid or not, he will decide and he will let you know by through message or email or something. But at the end, जोरदार मेहनत करो, पढ़ाई करो. और आप सीए नहीं बनोगे तो और कौन सीए बनेगा? You are a future of India. Wishing you all the best. May God bless you. Good luck. Tada. Take care. Thanks a lot. Thank you very much. For Yes, the reference additional of question all the bank. students. Sir, sorry, sir. Additional question bank is important. You have to solve. You have to go through it. Chalo, yes sir. Thank you. Bye. I'm leaving, For sir. the reference of all the students, जिस लिंक से लिंक ट्री से आप जूम की लिंक मिली आपको, उसी लिंक में आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वेबसाइट, सारे सोशल मीडिया की लिंक आपको वहीं पे अवेलेबल है, तो उसी से आप ज्वाइन कर सकते हो. एज वेल एज किसी ने चैट बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है, तो वहां से भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. And crash course probably we will be starting from 22nd May, that is Sunday. We will give you the detailed schedule through email as well as WhatsApp and YouTube. That's it, sir. Yes sir. Sir, yes. Pushkaraj has some doubt. Yeah, Pushkaraj, tell me. Yeah. सर, अगर इस अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो मुझे प्राइवेट क्लासेस लगाने चाहिए क्या? क्या? Sorry. अगर इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया सर मैं, तो क्लासेस लगाने चाहिए क्या? सेल्फ स्टडी अगर कर रहा हूँ मैं तो. अरे यार, तो तेरा क्वेश्चन है यार, कितने मार्जिन से फेल होता है यार? ऐसा मत सोच, पहले तो फेल का, पास हो जाएगा. और पास सर, मैंने नहीं हुआ उसके बाद पहला अटेम्प्ट दिया था सर, मैथ में नेगेटिव की वजह से बहुत कम मार्क्स आए सर मेरे, बाकी सब में पास था मैं, सेल्फ स्टडी करके सर. हाँ, सेल्फ स्टडी करके पास हो ही जाएगा, बराबर. जोरदार मेहनत कर, 100% हो जाएगा. और पास नहीं हुआ उसके बाद तेरे को ही सोचना है कि अगर देखो तू कम मार्जिन से फेल हुआ, then there is no need to join coaching class, just do hard work and can resolve queries and all. अगर हाई मार्जिन से फेल हुआ, then join any coaching class and just go through it. सर, आप कोई क्लास सजेस्ट कर सकते हो? कहाँ रहता बेटा तू? जलगांव में सर. जलगांव में? अब यार जलगांव में तो कौन से? सतारा. ऋषिकेश विल गाइड यू फॉर द सेम. अभी पहले क्रैश कोर्स बैठना, पहले क्रैश कोर्स बैठ जाओ, then later on just think about the coaching class and all, right? As you have not joined any coaching classes for your regular course, this is the crash course and then decide it. Okay? ठीक है सर, thank you. Limited time में you can avail the services of crash course, and after the exams we can check it out what should be done next. आपको जो personal strategies चाहिए, we can guide you through WhatsApp or email. Any more queries? Yes sir. Yeah. Chalo sir, I'm leaving the side, right? Once again, wishing you all the best. May God bless you. All the best. Good luck. Thank you. See you again. Bye. Okay. Bye. Sir, अपना 40 hours का होगा? ये तो sir? Crash course? Yes sir. Yeah. Yes sir. Our mathematics crash course will be of 40 hours. लगभग all the subjects will be among similar duration itself. 20 to 40 hours each subject. Anushka, any query? And if you do have any queries, please do email us at satara.wicasa@gmail.com. Thank you. We have already extended our session. 6 बजे खत्म होने वाला था, 7 बज गए हैं.
We can't extend it more. We have to give back the Zoom. Thanks a lot. Thank you for patiently waiting and end तक बने रहने के लिए बहुत ही शुक्रिया तहे दिल से. Yes, नीरज कुमार. This is the email address of satara.vikasa@gmail.com. Also, ये lecture is available on the YouTube channel. ये YouTube वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, वहां से भी हम कमेंट पिकअप करके आप क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे. एंड ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है. (9403347908). With this, we are concluding the session. Yes, अर्चन मिश्रा, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, Arshan, unmute yourself. Guys, crash course details will be provided soon. Stay tuned, subscribe कर दो YouTube चैनल को, Telegram चैनल को and WhatsApp. Thanks a lot. Yes, Hello. Arjun Mishra. Hello, sir. Yeah. Actually, sir, I am from EIRC. So, can I join the crash course of WIRC? Absolutely. Okay, sir. How to join the crash course? We will just the way you have joined this today's Zoom session, the same way link will be provided. Okay. Today I have received one mail from Board of Studies regarding this session. Same way. Also, you can subscribe to the YouTube channel. There also there will be notifications coming up about the whole process of joining crash course. Okay, the crash course will be started from which date? Probably maybe 29th May, Sunday. Okay. At that point of time, may I contact you in your personal contact number? Sure. WhatsApp. Okay. Try to avoid calling. Okay. Unless it is important. Okay. Thank you, sir. Thank you for your coordination. I am also available on call. लेकिन problem. Hello. It will be रहेंगे. Hello. One query was there, whether crash course will be paid or free, and nominal fees will be there per subject. Okay. The course will be conducted in Zoom session. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you for your coordination.